Good evening, everyone. I, Achyut Sharma, second year civil engineering student, SGSITS Indore. I am going to be your host of the day. I, on behalf of Stimulus family, wishes a warm and heartiest welcome to each and every one of you. On the occasion of Padma Vibhushan Dr. Vikram Sarabhai Centenary Celebration Remote Sensing Day, Indian Society of Remote Sensing Indore chapter presents a talk on engineering aspect and application of geospatial technology. I would like to welcome our speaker of the day, respected Professor Dr. S.K. Soni sir, former head Civil Engineering and Applied Mechanics Department, founder coordinator Center for Remote Sensing and Satellite Technology SGSITS Indore, our convener, respected engineer Kapil Dev Bhalla sir, chairman ISRS Indore chapter, co-convenor respected engineer Vivek Tiwari sir, honorable secretary ISRS Indore chapter and assistant professor civil engineering and applied mechanics department SGSITS Indore, and all respected professors. Respected Professor Dr. S.K. Soni sir, former coordinator TEQIP 1st, 2nd and 3rd, former head and professor civil engineering and applied mechanics department, has molded the life of thousands of students and served people with his kindness for years. He is known for his wonderful administration and high accomplishments. Respected Sir has done his BSc in Physics, Chemistry and Geology in 1975 from Holkar Science College, Indore, Masters in MSc Geology in 1977 from School of Studies in Geology, Vikram University, Ujjain, and have further pursued PhD in Civil Engineering from DAVV, Indore. He has received recipient of Certificate of Appreciation in recognition of services in field of remote sensing in Earth Science by Rotary Club in 1979, recipient of UNESCO Young Scientist Award in field of remote sensing in Earth Science for South Central Asia in 1988, and Best Paper Award on research paper entitled Application of Remote Sensing and GIS Techniques in Urban Planning and Management of Indore City. Sir has completed 8 research projects and many more in field of remote sensing. He has always been working towards connecting young minds to strive towards success and achievements. We are delighted to have you, sir, today. Now, I would request respected Professor Dr. S.K. Soni sir to please share your words of wisdom with us. Technology. Now, this geospatial technology includes two words. If you go for partitioning, it is geo and spatial and technology, or geo and spatial. You should not get confused with GIS and GPS. Actually, this geospatial includes geographical information systems, global positioning system, and of course, a remote sensing. So the entire thing combined together that we use geospatial technology. And engineering aspects of geospatial technology. See, when you talk of engineering aspects, this includes the technical aspects of related to a satellite, because ultimately, whatever the information you are going to get in the form of a geospatial, it will be delivered through a remote sensing satellites. It can be even a communication satellites also. But we are talking of remote sensing satellites. So remote sensing satellites, as you are aware, it is one particular, what you call, I will come back to the topic also. It works in particular wavelength or electromagnetic spectrum or electromagnetic radiation. We call it to be visual, we go to infrared and we go to far infrared, we go to microwave also. In microwave remote sensing, we talk of communications, we talk of weather forecasting, everything. So geospatial technology is a, what you call, very, I should call it in a close compact. It is a combination of geographical information system, which includes latitude, longitudes, and of course, geospatial with reference to, if you want to go for any, what you call, any analysis or download the data, you must have a link with the satellite in the space. And for your information, there are 17 or 20, around 20 satellites are moving in the space, and you have to get connected with any of the satellite. And once you get the connection, we call it telemetry and telecommand. So when you go for telemetry and telecommand, we
we have a signal processing, and once you connect it, then the data is what you call downloaded. So with this background, I'm going to speak today on a very basic lecture, but of course it will include a geosegment and some applications also that I'm going to discuss. So let me come back to the first slide. Just to click कर देंगे तो next आ जाएगा. Yeah. So geospatial technologies, as I told you, that this includes remote sensing, geographical information systems, global positioning systems, and I've explained it to you that you should have a link with a GPS. Now, if you are using a mobile, it gives you what you call a location. For example, Vikas was just coming to my place, and he landed in Manormagan, and he was just standing in front of me, and then he was locating to me. So what he did, he called me on a mobile, got in touch with me and asked me where I am. So I just told him, just look in the front. So just he bowed his hand, and then he located my accommodation, or he located my house. So this is known as a true globe or GPS. And of course, he was having a map also. He was having a location map of my house that gave you a geographical information systems. And with this, he located my house. Then what is remote sensing? Now in remote sensing, a data will be of two types. We call it a spatial and non-spatial. In spatial, it will have an image, and in non-spatial, it will have some sort of a map in the form of a topo sheet or that. So this geospatial technology includes remote sensing, GIS, GPS, and application areas. As I told you, location-based services and mobile GIS and web-based GIS. So what he has used, a location-based services means he was having a map. It was in the line diagram. Then he was having a mobile with him, and then mobile GIS and web-based GIS. He used all the combinations, and he located me. What was this? What was the aspect of it? This was related to urban planning or urban location, which he did it. So this is how the remote sensing or geospatial technology includes. Now, as I told you, what is GIS? I will come in step by step. That if you look to GIS, it is a focus of theoretical development with respect to spatial and spatio-temporal modeling. It becomes a part of a information science. It is a spatio-temporal modeling because you can change the modeling, you can change the location, you can change. And when the focus is utilized geospatial technologies, we solve the real world problems. What do my real problems? Real problem is on the surface of the earth, particularly on the earth, where that particular location is. Now, that location can be in the 3 dimension, it can be a building. You can even identify a person standing on the ground, a particular object. Suppose Vivek Tiwari comes and stands in front of my house. And if I have this concept, then I got the image, then I can locate him where he is. If he is in front of my house, then I can locate him. What is the lat long? There is a central coordinate. Then I can target him. Yeah, okay, he is here, and then I can go further. So this is, we call it geographical information system. Now we come to remote sensing. So I would like to tell that listeners who are listening from various parts of the country, I'm going to deliver a basic lecture with emphasis on the students who have little knowledge of remote sensing. And the experts who are listening to my talk, they may find it just to be very informative, but the basics I'm going to speak on it. Now, what is remote sensing? The fundamental concept of remote sensing is, as you can have a look, sun is the solar energy. Whatever we are working on remote sensing, it is through sun. You can have a night information also, but you will have own source of illumination that is high. But when you're talking of remote sensing, if you look, sun is the source of illumination. Incident light is coming on the surface of the earth. It is recorded by a satellite which is at D, and it is once again transmitted to an earth station, and then this particular information which is coming on the ground, it can be recorded with a telemetry telecommand, and it can be recorded
in various modes of application. It can be recorded on a tape, or it can be recorded in a CD, it can be recorded on a floppy. When we were working in 70s, we were recording on a, what you call, on a, there was a compacted disc, or there was a, we call it CCT tapes were also there. So remote sensing is basically collection of information about an object without making physical contact. Okay, I can give one very simple example, that when Vikas was here, I saw him for the first time, he saw me for the first time. How he identified me? What is the purpose? He was having an eye. Eye is the first sensor. If you don't have a vision, then you cannot do remote sensing. Because with the eyes, with the location where I am standing, though he was not having any information about me, he has never seen me in the past. Only thing that he was having, the brain, which has processed and stored, his object was, I want to come to Dr. Soni's place. So immediately what he did, he identified me and, okay, oh, sir, I am come here. This is how remote sensing works. Now, advantage of remote sensing is data can be gathered from large area of surface, atmosphere in short space time. In situ measurements below the surface out there, and it is the wide applications of the area. Now, what is the advantage? I can give a number of examples. Very frankly speaking, one recent example is there was an outburst of a dam in a place near Indore, which you must have seen. Now, the problem which arose about the water resources, particular dam, whatever the reason, I'm not talking about the, now it has to be monitored. Monitored by whom? Monitored by the decision makers. And decision makers who can be, I can name it, it can be a chief minister, or it can be minister for what you call water resources, it can be collector, or it can be people who are staying there also, they want to get the information. Suppose I wanted to get the information, I cannot visit the site. So what I could do, I will go to Google, I will go for search, I will location, and I can locate what is the status of that. So sitting in Indore, sitting in Bhopal, sitting in Delhi, or sitting in a remote village, if they have a net facility, they have a system, they can day to day, minute to minute monitor that what things are progressing, what is the problem they are facing, how they are solving the problem. Then they can instruct also the engineers or the administrators who are working on this site to sort out the problem. So this is one advantage of remote sensing, which is what you call, not over in India, you can see in any part of the world also. But there's a limitations. Let me tell you. Every technology has a limitation. You cannot expect that remote sensing has all the problems. Now, remote sensing will give you some initial information, but you want to identify the particular example. Let me give one example. I've done my PhD in remote sensing in geology. Now, I work in the Pachmadi area. Okay. Now, when I go for mapping, I will prepare a geological map of that particular study area. Then I will classify that this is the rock. A rock never says that I am a granite. Rock never said that I am a basalt. Rock never said that I am a sandstone. Similarly, there will be adjoining area and land that can be soil also. Soil can be black cotton soil, it can be red soil, but I can classify, I can make batches. Okay, this particular patch represents a rock, this particular patch represents a soil. Now, soil and rock, soil is weathered form of a rock. Now, I have to collect the information from the field that this particular patch comprises of a sandstone or basalt. When I conclude that this particular patch which I identified is a sandstone, then I have to generate a signature and name it. For example, when you are attending a class in the classroom, there are 40, 50 students are there. There are 10, 15, 20 girls are there. When I went to, anybody professor entered the class, he says, okay, this is second year civil engineering. Fine. Since he is teaching, it can be soil mechanics or it can be structure. Then the boys also know that we are learning soil mechanics. Then I must prepare a database for taking attendance. It can be in alphabetical order. Okay, he is Vikas, or he is Vivek, or he is Ashok. And then I prepare and I get a big feedback. Okay, they are the students, they are said this. So you have to classify each and every student. Okay, this is how the remote sensing will work for it. Applications, remote sensing, there are number of applications are there. We call it military reconnaissance, we call atmospheric also. Now, what is atmosphere? Now, if you must have experienced recently that there is an Indian meteorology department.
They are predicting the weather forecasting. They are making all information. If when you go on Google, they will tell you that how the temperature of that particular city is starting from 7 a.m. till 24/7 of next day, 8 hour, 1 weekly, that volatility temperature, it will be 25, 26, 27, 28, it will come down. Then what is the precipitation? How much there will be rainfall? What is the clouds? Because clouds ultimately are responsible for the rainfall. Then what is the wind velocity? Because ultimately sometimes you feel that clouds are moving at one particular speed. So they make a prediction that suppose clouds are in Indore. They are comprising of a water-bearing clouds, and they are moving in northwest direction, northeast direction, or southeast direction. They have got the speed also. At what speed? Then they control and they go for management and therefore go for modeling, and they predict, okay, after 15 minutes, the clouds will reach to Devas or they will reach to Sihor, and then predict that if there's a rainfall is there at Indore and when it reaches to Sihor, what will be the quantification of rainfall? So this is one application of atmosphere. Now, there is one important aspect of tectonic movement. Tectonic means related to earthquake. Related to earthquake. It is a very deep subject. Earthquake is a very deep subject, because recently we have heard that there was some some earthquake around Indore, having a intensity of say 2.9, something like that. So then what is the cause of this earthquake? See, it is related to geology. We call it plate tectonics. That is another deep subject that you have to find out what is the cause. That study can be done. Then land cover. That land cover is basically urban planning management. In every city we are talking of a smart city. We are converting agricultural land into a smart city. We are converting old houses into a multi-story building. So this is a land cover and land use. They are two different things. Land use and land cover. Land use is that suppose one classifies agriculture. So land use becomes the agricultural area. But cover is whether you are saying wheat, whether you're going for corn or whether you're going for cotton. So if that farmer is using that particular land for agriculture purpose, for growing of cotton, then land cover is a cotton. It can be soybean also. Similarly, there's ocean applications. We call it oceanographic study. Particularly, oceanographic study is very useful for fisheries. You must have found that our Indian particular continent is surrounded by seas like Arabian Sea, Bay of Bengal, and Indian Ocean. Fishery is very important. So the movement of fishes depends upon the temperature of the water. So that particular study can also be done by remote sensing. And of course, snow and ice, we call it a cryosphere. Because see, our entire economy of India is based on rainfall or rains. And from where we get the rains, there's Himalayas are there. There's a snow melt is there. There's ice. So all the applications of Let me come to basic from where we started remote sensing. There are the three pigeons you can find. We used to put three cameras. There's one camera. And these pigeons are very obedient. Once you ask them to fly, they will fly to their particular place and they will come back. This is how we started somewhere in early 1920, that the cameras were put and that they were recording the image and the camera was recording. This is the beginning of remote sensing. We call it aerial photograph is one. Yeah, I come back to one. We call it the physics of remote sensing. You must have gone through the physics. We call it visible part of spectrum. That's starting from what we call 0.4 micron, we goes to 0.7 micron. Violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. They are the 7 colors. We call it VIBGYOR. So this particular VIBGYOR is a visible part of spectrum. Then there is a left part of electromagnetic spectrum. There is a right part of spectrum. In left, there is a 10 raised to -1 to 10 raised to -3, something like that. And similarly, you have a positive part that is 10 raised to 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 that you can see. So this positive part is actually the remote sensing area. Left is also, minus is also remote sensing, where you have X-rays, you have a sonography, you have a magnetic resonance imaging. They are known as the biomedical aspects of
remote sensing, and on the other side, the positive part, we call it a remote sensing. So you have a what you call infrared, ultraviolet. You are able to use a mobile today. It is because of radio waves. Initially, if you are, I don't think if you ask your father or your grandfather, initially we were having radios who were working on a frequency that was a medium wave, one short wave, two. Then we had gone in a higher band, higher frequency. That was through what you call, we have a different type of waves are there. Waveform is there, that I will come little later also, what types of waves you have. When you go in high frequency, the natural disturbances are avoided, and mobile communications, if you are using a mobile, it is because of radio waves. Whether it is raining or it is a cold or it is a hot, your mobiles are competent enough to receive the signals and to transmit the signals. When you're talking on a mobile, you are using a frequency, voice frequency, and it is transmitted through wireless technology. So this is an advancement that we have made in remote sensing. This is known as the basics of what you call electromagnetic spectrum. सर एक मिनट, वो स्क्रीन मतलब शायद शो नहीं हो रही है. मतलब मैसेज आएगा. मतलब फर्स्ट स्लाइड पे अभी तक रुका हुआ है. देख रही है. Yes. I think now you are visualizing the PPT. Yes, sir. Yes, sir. There was some problem with you initially. Some problem was there. Yes, sir. Yes, sir, sir. सिर्फ front page show हो रहा था. Should I go back? No, sir. You can No, sir. continue. Okay. Now this particular cameras where we started remote sensing, it was a 70 Hasselblad cameras. This was used for aerial survey. There were 4 cameras. They were working on a 4 different frequency. On the right side, you can have a what you call look to an image. It is the same image of same city, but in different part of a frequency. Though they are saying to be Los Angeles, you can see that variation in the tone. Tone means variation in the color. Okay, if you look this particular PPT, there are different classes of land use, or you can call it. The roads are there. There is a agricultural land is there, and their houses are there. They are starting from infrared, near infrared, 0.7 to 0.1 micron, and if you at the bottom, there's a 0.4 to 0.5 micron. It is, we call it, it is infrared, then blue, green, yellow. There are different bandwidth in which the data is recorded, and on this side there are 4. We call it multi-band information. And there is a circular plate where all the cameras, 4 cameras, are mounted together, and they are taking image simultaneously with the center of the lens and the center of the object or ground. It is there. We call it center location. We call it ground location. It is center. So this is how we started with area survey and multi-band vertical area, vertical photographs. It can be oblique, it can be low oblique, it can be high oblique also. Yeah, we call it a satellite to be sun synchronous. Sun synchronous means it is orbital plane process around the Earth at the same angular rate at which Earth moved around the sun. You know, sun moves at one particular space, at a particular speed further. Then Earth also moves at one particular speed. Now, and satellite also move at one particular speed. The classic, what you call, the enjoyable part is that sun is moving
Earth is moving and the satellite is also moving. You can see the different speed also. Now, when all the things, three objects are moving, and it should be what you call when sun moves, then at what angle, at what speed, they have to be synchronized, and then that information is there. Earth is moving in a clockwise direction. Okay, then that particular sun is moving in a different direction. Okay, and there is a satellite in the space that is also moving in one direction. So satellite is moving clockwise, Earth is moving also clockwise, and sun is also moving clockwise. So there should be a what you call understanding. There should be a understanding. I'm using the literary word. There should be a technically competent that all the three satellites move at one particular speed and one particular angle, and they take the image. And there's the angular speed. Their details are given. It varies from satellite to satellite. There was a spot satellite system. I will skip that particular satellite. There was a French satellite. So see, there is one agencies, we call it INCOSPAR, International Council for Space Research, and there is COSPAR, Council for Space Research. So this International Council for Space Research, if any country want to launch a satellite, he has to inform the council that we are going to have this particular satellite. This particular satellite will be at one particular height, at one particular orbit. This will have our sensors. So all these things will be informed, and then they can go into space. Otherwise, there's an Indian satellite, there's a Chinese satellite, there's a French satellite, there's an American satellite, there are Russian satellites. If we don't follow that what you call agreement, otherwise they will clash. So there is a what you call a space treaty is there of the participating country. This is for we call it a spot satellite. Now CCDs, we call it, this is a very important. We call it charge coupled devices. CCDs. What is charge coupled devices? See, when you are putting a satellite into space, there are sensors. Now those sensors can be of two types. One will be imaging sensor, other will be non-imaging sensors. Okay, imaging sensors means they will take the image of object on the ground, record it and transmit it. Then they are the cameras. Camera is the first what you call a sensor, imaging sensor. Then you have a non-imaging sensor. It can be a scanner. The simple example, multispectral scanner. Now, multispectral scanner will scan the object at particular speed, and it will give me a what you call analog data. It will give me analog, a graphical form data. I have to convert the graphical data into digital and digital to image. Okay, and there should be, why we are taking image? Because we must have an image of that object and we can go for accuracies. I will come a little later also. There's a detectors are there. We call it detectors. Detectors are basically a charge coupled device. It can be a detector have a one resolution. Now detectors, even in camera, if you look, there's a lens. It is an optical system. In lens also, there is a curvature, there is an optical center of the lens. Then you divide it, concave, it can be convex, it can be concave, convex, both type of thing. So if you're moving from the center, there will be image distortion will be there. It can be positive, it can be negative. That is what I want to tell you, that if you're moving from the center, there will be shortening of the length, increase of the breadth, or there will be shortening of the length, increase of the breadth, or decrease of the breadth and increase of the length. So if the object, which is a natural object, you have to bring it in particular frame so that you can identify. Sometimes when you go to the museum, there are different type of mirrors are there. When I was a young boy, we used to go to museum, and that museum will give me that how fat I am, how thin I am. So this is we call it optics sort of a thing. So detector receives the light in narrow strip 1.5 time, during which satellite moves at 10 meters forward. In one particular satellite, that depending upon the speed of the satellite, how the detector will receive. And there are multispectral means there are 4 cameras are there. Even in non-imaging scanners, there will be different type of bandwidth of the scanners. So there will when elements are there, that is 728 element means 728 detectors are there. They are the charge coupled devices. They are receiving the input in 728 element, and it has to be what you call ultimately clubbed together to get a final. What is the purpose of remote sensing? Purpose of remote sensing is that we have to identify the object which is far off without coming in contact with that. So you can have a look this particular screen on the PPT, that direction of motion of the Earth. Then there is a satellite.
And what is the swath? It is 3 kilometer, 60 kilometer, and 170 kilometer. So this is a central line. So from center left, center right, like this. So this is known as swath and wind direction. So they are the what you call charge coupled devices which receives the signals. The CCDs are there in what you call a scanner. They are included in the cameras also. Now cameras have become digital nowadays. Initially, when I started remote sensing, we were using the what you call a black and white roll was there, photographic roll was there. There was a colored roll was there. It was all in the recorded in the photographic roll. Now the technology has come to this level. When you're using a mobile, you don't need a roll. You are basically taking information in a what you call bit byte data. It is a what you call non-image data, and you have in the mobile you have a system that moment you take the image of that particular photograph, I'm calling it a photograph, it automatically records and automatically converts into an image. This is how remote sensing. Today we are working on digitization. Digitization we started long back somewhere in 70s. That was I'll come later on. How a satellite works. This is a classic example of remote sensing. You are seeing there are two satellites. Okay, they are conjugate. They are each touching each other, and on the bottom you find there is a rectangular field of view. Okay. So you can have a look how the image is recorded. I want to know one thing. I want to inform one thing about it. You got two eyes, left eye and right eye. You got a left eye and right eye. Yes. You are seeing one object. You are seeing objective one, but you are seeing through left eye. You are seeing through right eye. Okay. There should be two images. One image forming on the left eye, other image on the right eye. Then if you have a normal vision of 6 by 6. When the image comes to your eyes, there's a retina. That retina that focuses both the images together, and you see one object. Center of eyepiece, left eye, center of right eye, we call it eye base. It is known as eye base. Now, if there's a distortion of eye base, then you will have two images. Left eye will have a right image. If your vision is not proper, then what you are wearing is specs. When you wear specs, what spec does is specs is bring it to 6 by 6. That is normal vision. This is how. Similarly, when you have a look through satellite, then you get a 3-dimensional picture. Similarly, when your eyes are there proper, you have not only identify object is known as photo interpretation. Then you want to measure. That is, if I'm standing, I'm thinking that what is my height, what is my width, and length, breadth, and what is the length also. So length, breadth, and height, that gives you a 3-dimensional picture. We call it a stereoscopic vision. It is so this particular two satellites, they are taking images. Okay, then center of left, center of right, both, and center on the ground. There is a center of the photograph that will give you image. Then what is the height from the base? That will give you the 3rd dimension. So if you look to, there are basic instrument mirror stereoscope. If you look two photographs together, if you train your eyes, then ultimately when you form an image, it will be a, what you call, it will be a single image. The photo identification, and then with the help of some basic photogrammetric instruments, you can measure the size of the object. This is how remote sensing started. Now oblique view. The previous slide, it was giving you vertical. You can tilt the satellite. It is 20 degree left, 20 degree. Both the satellites have 20 degree, 20. And 120 kilometer is the what you call width of on the ground, and 600 kilometers is on the length of the ground. So we call it oblique viewing, stereoscopic, and accessibility. So satellite takes the information. It can be onboard processing also, and it can be transmitted to the Earth station, and you can have a recording on it. So there are two ways that satellite records, and evening time it transmits the signals. We have to work for it. And if you want to go on board, when satellite is taking the information, you must have a facility Earth station that you can track the satellite and you can record with the data. Data can be recorded in image form, data can be recorded in non-image form, but you must have a facility to record this information. This is, we call it oblique viewing. Yeah, have a look. This is Iconos panchromatic stereo pair of Columbia Airport. Now have a look. You just concentrate on the two images.
There is a, what you call an airport. There's a terminal building is there. On the ground, you can see that aircrafts are standing. Not standing, means aircraft are placed on the ground. There is an aero bridge is there on the terminal, and you can see the exact location. Okay. Now on the other side of this, which you must clear, there's a black, there's a shadow. Shadows are obscuring factor in remote sensing. Obscuring, but they are very helpful, because sometimes if you are unable to identify the object and if you are able to identify the shadow, so with this shadow you can definitely identify that particular person, that particular object. Here if you look shadow, you can look the shape. So in elements of photo interpretation, there are basics elements. One is known as you should have a color, you should have a texture, you should have a shape, and you should have a location. So they are the few elements of photo interpretation. When you will leave this institute, you will take a group photograph, okay, for your memory. Now when you take that photograph in the memory after 4 or 5 years, oh, he is so and so, oh acha acha, ye sa dikhta hai, ye sa ho gaya, ye ho gaya, because it is stored in the memory. Okay, so similarly, if you have this particular image, which is, I'm calling it to be 2004 data, if I have a data of 2022 of this particular airport, then I can compare change detection, how many things have changed. Change is a natural thing. So this is how remote sensing works. And ICONOS is an American satellite. You can see the resolution. You can see that everything is very clearly visible. And this particular output I am picking in the form of as a PPT. It's a very, very, very simple. Simple in the sense that it has been reproduced number of times from the original image. So the original image must be far better than what I am seeing here. Then you can see Bombay, now we got a Mumbai airport. This is an express highway. This is an express highway. And this is a Santa Cruz airport. Okay. You can see the runway also. Nowadays, nothing is secret. Everything is available. Once it was restricted area. No, you can't take the photograph. No, you can't take this thing. You can't do this thing. You can't do. No, you can count the number of aircrafts. You can look to the shape of the building. There's an urbanization also. It is near Santa Cruz, the locality. If someone has gone to Bombay or Mumbai, they must have seen that the Santa Cruz East, Santa Cruz West, there's an express highway coming to that. Everything is clear. This is a Google image. Now we have got our own satellites. I will come later. Then you can have, there is a, at the top right corner, there's a north-south. That gives you what you call a geographical information. Earth, what is the lat long? Yeah, now you come to, this was a part of urban. I come trying to Gangotri Glacier. The Gangotri is very well known in India. You can have a 3-dimensional picture also. For a common citizen, he will say, oh, it is just, I don't know what it is, But a geologist or a geomorphologist or expert working in the area of snow, they can identify that what is a drainage. The black part is a valley part. And on the top right, the white, there is a snow. It is a 3-dimensional picture. Okay. Now, when snow melts, it becomes water and it is coming to the channel in the form of a river. You can identify how much quantity have been melted and how much water has been come and where it is flowing. Okay. You can have complete, the data can be we call it it can be geospatial, it can be georeferenced also. What is georeferencing? In georeferencing, this particular image will have some lat-long center coordinate. I have a topo sheet. We call it based on ground-based information to a map. I can superimpose both the data together. I can make a superimpose both data together. If it is a multi-band data, I can make a 3-dimensional picture. We call it digital elevation modeling, DEM. We call it digital terrain modeling. This is entire terrain. We can have one window smart passwords. And then we can go for complete terrain modeling. That what is the ground contour and what is the contour of the highest peak of this particular glacier. So you can get the height of that particular glacier. Then you can take out the area,
Then you got onto a volume, that how much snow is there. Quantification is also there. So photogrammetry and photo interpretation, they go together. So this is a Gangotri glacier. It is a 3D view. Okay, I'll come to this is aqua instruments. See, what do you mean aqua instruments? In the month of July, August, September, or say June, July, August, September, you will have water. So one specific study is required of water, because water is a basic requirement. When the clouds are formed, there is a simple theory of what you call it, earth waves, earth temperature and sea temperature. And both this gives the what you call precipitation. Have a look. Now have a look to this. Have a look how the satellite functions and how a satellite takes information. A satellite, there is a one antenna is there. We call it Earth. It is moving and the image has been recorded. Enjoy this movie. This will clear the concepts of how the information, here satellite is also moving, Earth is also moving, and over which there is a source of illumination that is also moving. It is recording, see the light is coming. You can have a nighttime photography also. In nighttime photography, you need a beam of light that will be very high penetrative, not penetrative, high beam there. So this takes the information and it is rotating. You can see the satellite is also rotating. There is a solar panels are there. The solar panels are basically, they are charging the entire, what you call, payloads of that particular satellite. Then you can have a look to the camera. Camera is also taking the information. So data is recording in the image form, data is recording in the non-image form, data is recorded also, and data is transmitted. It can be onboard transmitting or online transmitting, or after recording the image, when satellite goes, just like your aircraft goes in a hangar, you can put a satellite into it can stand still also, like in a platform, in a, what you call, in a garage. So satellite will work like that. Have a patience. My lecture will be rather more than 1 hour, and I think you will enjoy this particular remote sensing. Because in civil engineering, any work, whether you want to go for any dam study or any type of study, you have to look to the image. Suppose you want to work in a Maheshwar area. So with this small, you may call it to be a movie where your concepts are clear. Now we talk of a hyperspectral remote sensing. The sensors are in visible part and they are in a hyperband also. Hyperspectral sensors or imaging spectrometers are instruments that acquire images in many very narrow contiguous spectral bands throughout the visible, near infrared, mid infrared, thermal infrared portion. Now what is thermal infrared? Thermal is temperature. Okay. Suppose there is one patch of cloud. A cloud you can classify. A pure cloud looks like a cotton. The moment water enters in the cloud, the tone changes. It becomes black. Now, what is black and what is white? Black, if you look to that, it is in terms of temperature. You can have a temperature range, infrared portion of the spectrum. In infrared region, how much is the variation? Now, if you have a more, what you call, cloud having more water, it will have one particular, what you call, signature. If you have a less, then you can quantify. You can quantify. We can convert the, we don't want, in the cloud, we don't want an image. We just want to know what is temperature and what is the quantum of water. So that will be called to be hyperspectral remote sensing or sensing. And this system collect data in 200 or more bands. Because you have to have a cloud, a quantification. Quantification, that particular cloud contains 100 liters of water or 200 liters of water. So there's a scale will be there. Okay, this particular temperature will have this unit of water. This temperature will have this unit of water. And then you combine, compromise, go for statistical analysis, and then you make prediction
that there will be at least 3 to 4 inches rainfall in this particular region or 2-inch region. So you classify. It means the quantification of water, that we have a rainfall of 35 inches or 40. There's a rain gauges are there. So it is a ground-based information correlated with the satellite remote sensing. Then similarly, we can use for bathymetric study, that is soil type. For example, if you are an engineer, you go to the field, you collect a soil sample. In the lab, you bring it and you want to classify the soil. You classify the soil on the basis of Asst.Prof limit. That was a liquid limit, what is plasticity limit, what is plasticity index. Then you classify on the basis of texture, it is a coarse grain, or it is medium grain, it is fine grain. You classify that on the basis of chemical composition of the soil, whether it is having a black soil, then how this will work. Similarly, there are many examples for mineral identification also. Basically, rock is an aggregate of minerals. Minerals means, if you look to a granite, it contains quartz and feldspar. If you look to basalt, it contains some pyroxenes. So there is a mineral composition. So you can, if you have a spectral data, depending upon the study, if you are a geologist, if you are an engineer, if you are an agriculturist, or you have a water resources, so you will have a windowing. If a water resource engineering will talk only of water, geology will talk only of geology, agriculture will only talk of soil related. So there are applications, it depends upon this thing. Similarly, when you go for any party, there will be Chinese food will be there, there will be a Punjabi food will be there, so there will be some tidbits will be there. Now it is up to you. What do you want to take the food? Do they want to have a Punjabi food? Okay, you take Punjabi. I want to have a Chinese food, I will take Chinese food. So things on the surface of there, all are visible. Now it is up to me or up to individual, whether you want to make a geology study, or they want to make a water study, or they want to make transportation, all this. You have a look, that you can identify the roads. You can see the width of the road. If you have a theta, you can find out the thickness of the roads. So this depends on applications. It depends on individuals. Yeah. This is what you call a three-dimensional picture. There are different layerings are there. So there is a top on the left side. You may find that there is a meandering of the river. Okay. Then there are trees are planted there. And then you have each pixel has associated continuous spectrum that can be used to identify the surface materials. Okay, as I told you that every object has a reflectance value. If I want to identify a river, it will have one particular reflectance. It will be in the form of a analog data. 0.4 to 2.5 is the wavelength, micron. And there's a R, red, reflectance. And there's a curve, there's a sine curve is there. So there are notches are there. Then what is the width of this notch? Why it is wider, why it is going down? It is for classification. Because different objects will have a different value. Even in water, if you look to one corner, if you go to other corner, there will be variation in the depth, there will be variation in the width, so there will be variation in the reflectance value. So it is basically each pixel is associated and it is a part of a spectrum. That is image and spectrometry, we call it. Okay. Now, this is also Earth observation satellites. I will speed up because time is moving very fast, and I can go on speaking for hours together. Because when we were taking a class in GST, we have a 2-hour session, 3-hour session. It was normal for us. So this is have a look to Hyperion is a one particular type of satellite. You can have a look that what are the different composites or different parts or different we call sensors. There's atmosphere characters there, advanced imager is there, Hyperion, the X-band phase is there. So these are the carbon radiator is there, then lightweight flexible solar LA. Solar LA is just like a heart of our body. Our heart, heart is the main. If heart is functioning, then you are alive. If heart stops functioning, then you are dead. Similarly, if solar LA is not working, because from where this sensor is getting power to work? It is a solar panels. This is solar arrays. They receive the signals and energy. They store it and they transfer it to the various satellite. It is a continuous process. It is a continuous process. This is mineral using hyperspectral data. I don't know whether you read geology or not. You read. Nobody has read geology. Nobody has studied geology.
Very common thing. There is a fold. You can look. There are two images. There's two images. Okay. Now these two images are used in different part of a spectrum. At the bottom, there are curves are there. Now the curves are similar. Nature of curves is similar. There is a notch at the bottom. There is a notch at the bottom, and there is a change in the top layer. Why there is a change? Because the change may be due to some change on the surface. When there is a change in the surface, you will have a different, what you call, different, you can classify the image. Similarly, when I stand here, suppose I am taking a good photograph, there are 10 students in the row, all are having black hair. When you look, your hair will look black, but there is a different intensity of black. Okay, we call it a gray scale. So what is a gray scale? White and black, they are the two extreme colors. Your hair can be white, your hair can be black. So there are 16 gray levels. If you mix 1 unit of white and 1 unit of black, it will give gray color. Gray is a mixture of two, one same unit. And if you add more black, then it will dark black or this black, or you have a white and white. So they are the different, we call it scale. And black and white, they are the two wedges, we call it. Okay. Then no, colored is a different thing. In this case, you have a look to color. So you can classify a thing better when you have a different color. If you're looking to a movie of 1960s, it can be Beju Bawra, it can be, they were all black and white movies. All heroes, they were looking black. The first Eastman color movie came in 1965. That movie's name was Sangam. That was the first Indian movie. It was a colored movie in 1960. Otherwise, initial movies were all black and white. So colors are very useful. Then mineral distribution, you can discriminate. There is a center, there is a yellow. And if you look on the left, there is a difference. So then there is a different reflectance. So you can use for classifying the image. Then crop discrimination. You have a look. This on the side, there is a there is a what you call an agriculture field. In agriculture field, I am owner of one particular 1 acre or 2 acres of land. Other is having 2 acres of land or 5 acres of land. I can go for wheat. He can go for maize. He can go for barley. He can go for anything. So different, but they are in one particular patch. And different objects are there. Different crops are there. So different crop will have a different reflectance value. You can discriminate the crop description. Here you can see how a potatoes will be there, how a barley will be there. So see, the wavelength is same, but reflectance is different. Because different reflectance value. Then you can, one particular reflectance, you can classify, okay, this reflectance, one particular pattern. We call it pattern recognition. Remote sensing, there is a pattern recognition. Also, birds with same feather fly together. मतलब कि जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स विद सेम फेदर, एक फेदर के होंगे, सब एक साथ उड़ेंगे. लड़कों में भी ऐसे होता है. हम हॉस्टल में रहते हैं. अच्छा, ये ग्वालियर के 5 लड़कों का ग्रुप है, ये सतना के 4 लड़कों का ग्रुप है, ये उज्जैन के लोगों का ग्रुप है. दो वी आर बिलोंगिंग टू स्टूडेंट कम्युनिटी, वी आर वन फर्स्ट क्लास, बट वी मेक पैचेस. अरे ये मेरा गांव का है, ये मेरे शहर का है. सो व्हाई we are more comfortable with our own group of people. Similarly, if there is one particular barley is there, they will have one particular pattern. One wheat, they will have one particular. Now, wheat can be sown in Indore, wheat can be sown in Pune also. There's a different varieties of wheat are there. So you can classify. You can have a spectral response. You can have different values. If you have a wheat of, we call it, एक कोई चंदोसी गेहूं आता है, एक मालवी गेहूं आता है, कॉर्न की भी बहुत सारी वैरायटी होंगे. हमारे मित्र हैं जो बैठे हैं यहाँ पे, विकास, his father is a very known farmer. He knows that how different type of crops are there. यहाँ पे wheat, यहाँ पे cotton आएगा तो सतना में cotton नहीं हो सकता. यहाँ पे और देखो यहाँ पे, so you can go for satellite imaging for different type of image agriculture. Let us go on technical aspect. Geostationary satellites. This is one important. What is geostationary and what? Geostationary means a satellite which is stationary with reference to Earth. Then you have orbiting satellites. Okay. What is geostationary? Well, a simple classic example is of mobile. Now, if I am using a mobile in Manoramaganj, and if I go to GSTI hostel, I have covered a distance of 3-4 kilometers. Okay. I am having same mobile. Same sensors are there in the mobile. But with reference to Earth,
this mobile has been synchronized. If there's no synchronization, then you will not be able to do it. So what I want to say, that there are two types of satellites. We call it in India, we have got INSAT, Indian National Satellites, and we've got Indian Remote Sensing Satellite. In Indian National INSAT, if you're looking to TV, so satellite should be stationary. If Earth is moving, that with reference to Earth, satellite should also move. Then only you will have to enjoy the match. So Indian cricket team is in Zimbabwe. अब द क्रिकेट के शौकीन है, जिम्बाब्वे में है. जिम्बाब्वे में टाइम वेरिएशन है, ठीक है. तो व्हाट दे विल डू, दे विल हैव अ मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल अर्थ स्टेशन इन दैट पर्टिकुलर. दे विल बी रिकॉर्डिंग द इमेज ऑफ a cricket match and it will be transmitted. If the ground is fixed, but earth is rotating. Earth rotate कर हमको मालूम पड़ता नहीं कि अर्थ हम भी rotate कर रहे हैं, because that's it. So if the earth rotates, then satellite should also. So it's whatever the speed at which earth is moving, satellite should also move, and the focus should be there. So they are known as a geostationary satellite. They are stationary with reference to earth, and orbit is about 36,000 kilometers. इतने ऊपर जाके satellite काम करता है. Satellite will continue at a point. Continuous data are available for monitoring atmosphere cyclones, and optomechanical scanners are being used for collecting the data. In remote sensing, we know that we don't need geostationary. We have to, satellite will move, take them and go back. So remote sensing are orbiting satellites, and all the communication or weather forecasting or TV program do work in micro region. They all are stationary with reference to it. These are two classification. Okay, let me skip this also. This is thermal infrared remote sensing. I told you about thermal infrared. The reflective is 0.4 to 3 micron. Thermal infrared is 3 to 14 micron. 3 to 14 in such a high domain they are working. And then you have a different what you call, when when you're taking an image, when the sunlight comes to the surface of the earth, there's an absorption of the light by that particular object. यदि कोई चीज हम सन की एनर्जी आ रही है तो उसमें एब्सॉर्प्शन होगा, रिफ्लेक्टेंस होगा और रिफ्रैक्टेंस होगा. Reflectance and absorption. And they're different on the surface. There is a carbon dioxide, there's a oxygen is there, there is a water is there. So different, what you call, there are different chemicals are there in the form of pollutants. Now in remote sensing, we are putting a sensor which monitors that how much carbon is emitted from a moving vehicle. So that can be also recorded. So it is visible part, reflective infrared and thermal infrared. This is nighttime thermal infrared imagery. Means if you want to take an image for artificial intelligence, so you have to go for thermal infrared. You can see the different aircrafts. You can count the infrared. You can improve the quality of the image also by digital image processing or digitization. You can call. This is one a PPT just for your knowledge purpose, for teaching purpose. This is a pre-dawn thermal infrared effluent entering the river swamp. The problem with the industry is that in the night time, whatever the effluent is coming, they put it in the river. मतलब कि जो भी केमिकल इंडस्ट्री का एफ्लुएंट निकलता है वो नदी में बहा देते हैं. That also you can monitor. कहाँ से आ रहा है पानी, गंदा पानी कहाँ से आ रहा है. यदि खान नदी में पानी गंदा हो रहा है तो कौन सी इंडस्ट्री खोल रही है, तो उसको वही रोकना पड़ेगा कि भैया तो इंडस्ट्री वाला पानी को क्लीन भेज, नहीं तो हमारी नदी खराब हो रही है. So that type of pre-dawn infrared imagery for effluent entering the swamp system. This is how remote sensing works. Then you can go for enlargement and direction of the image also. Microwave, radiometers and radar. This microwave and radiometers and radar, they are high frequency. Radar. Nowadays we are going in India also. Otherwise, when I was studying, when I had been to Canada or US, on the highways, they put a radar. If there's a speed limit that your vehicle should move at 40 kilometers. And if you're exceeding the limit, the radar will catch it. And there is an imaging sensor. You identify the motorcycle vehicle also. It can be two-wheeler, it can be four-wheeler.
Once you get the number, then you know, okay, that vehicle was belonging to Siddharth Soni. I have broken the law. The speed should be in 40 meters. I crossed 50 kilometers per hour. It is for what you call a transportation applications. And radar imaging. Radar can be used in a space also. Similarly, you have radiometers. Radiometers, what you call used to, you can have a ground-based radiometers, you can have a radiometer at a high aircraft as well as in a satellite also. Advantages of this: all-weather capability, day and night ability, penetration through a medium, information through microwave is different from that available in visible and infrared region. Okay, suppose in the rainy season at the present, there is no sun, there is no what you call energy getting from the sun, but the clouds are there. Clouds are there, and it's raining. So it should have a sensor in a satellite, whether it can have the all-weather capability, and it should have a capability to penetrate. You can see that if there's a cloud is precipitating, water is precipitating, then you can monitor it. And it is through microwave in different form available from visible to infrared region. And at the bottom, once again, you can see the earth, they both are rotating and all this thing. And the signals are coming down and going back. And once it is recorded at the earth station. If you're talking about weather, rainfall, then IMD, Indian Metro Department, is responsible for weather forecasting in the country level. In every country they have. They're the advantages of microwave remote sensing. Then penetration through radar, microwave. You can have a different soil, this type of a thing. So sensor should be capable enough to penetrate and come back. So sensors is one important aspect. So remote sensing is based on satellites. It is based on antennas also. And it is based on sensors also. It is a very, very, what you call, a technology, combination of physics, combination of mechanical, combination of electronics, and it is a complete, you call a complete food is there. Multi-frequency, that's X-band, C-band, L-band. There are different bands in which the signals are recorded. And you have to design a satellite on this. So there's a multiple polarization also, because different trees will have different reflectance, so it should polarize. This is how we call it penetrating microwave. Okay, let me go for skip this. Yeah, have a look to this particular. It is a thermal response. It is not an image. It is a false color composite. In the false composite, you can have a different part of countries are there. Okay, then you can, there's a scale is there, and there's a scale. If you look to the top, it is 300 red color, and if you go to the bottom, it is neither gray. It is 100 degrees. So there's a variation of 100 to 300. It is not. It is centigrade as well as Kelvin. Kelvin is also a unit, so you can convert centigrade into Kelvin or Kelvin into centigrade. Okay. This is how we call it a brightness temperature. This brightness temperature, because if an object is white, it will have one brightness, one particular value. If you have having a black, it will have negative brightness, negative of white. It is a black, and this is how we monitor for what you call brightness temperature is converted in the form of what you call rainfall. Now this is a soil moisture. See, अभी हम soil का moisture निकालेंगे तो खूब पानी रहेगा बड़ा, it will be 100%. If you want to take a black soil, it will be clay soil, हाथ में बिल्कुल मिट्टी बन जाएगी, paste बन जाएगा. The moment the temperature goes, September जब rainfall जाता है, October में आता है, temperature बढ़ेगा, तो soil का temperature, soil का जो moisture है वो evaporate होगा. Black cotton soil has got a flexural behavior. It expands, it swells. आपने पढ़ा होगा soil mechanics. There is a swelling phenomena of black cotton soil. So swelling phenomena was everything. आपके बॉडी में कुछ इन्फेक्शन होगा तो चेहरा फूल जाएगा, swelling हो जाएगी. Swelling होती है ना. और कुछ बॉडी में इन्फेक्शन होगा तो swelling हो गई है. There is swelling. Some reason is there, some cause is there. Similarly, there is a swelling in the soil.
सो डेली मॉइस्चर कंटेंट आप एक एक दिन का मॉइस्चर निकाल सकते हैं कि 29, 30, 1, 2, यू कैन सी देयर आर डिफरेंट शेड्स, यू कैन क्लासिफाई एंड यू कैन गो फॉर क्वांटिफिकेशन आल्सो. And once this scale is there, 40% is blue and 0% is moisture is on the brownish or reddish brown side. मैं रोक देना जब आप बोले बंद कर दूंगा मैं बस तो मैं तो 2-3 घंटे. Anyway, forget about this slide also. Radar set. This is the image of Himachal in 1994. C-band antenna, synthetic infrared. A simulated infrared image of Himachal Pradesh. In the night they have taken. Okay, you can pinpoint there is some road is going like that. Have a look to this particular, how it looks in the night. The complete road on the right side is taking a curve. Sometimes, it becomes very useful in nighttime photography also. Nighttime photography. Then this is considered Siachen Glacier. It is a radar on the left. On the right, it is a different optical FCC. We call it optical FCC, optical false color composite. What do you mean false component? There are 3 band data. This is black and white, and your 3 band, band 5, and composite. So you can see, हमारा basic purpose क्या है remote sensing में? हमारा purpose ये है कि उस जो सियाचिन एरिया है उसको क्लासिफाई करना है. वो हमको ब्लैक एंड व्हाइट में दिखे, हमको कलर में दिखे, हमको उससे प्रॉब्लम नहीं है. वो कंपोज दिखे. हमारा ऑब्जेक्ट इज व्हाट. जैसे आप भी पढ़ रहे हैं तो आप जो ऑब्जेक्ट है, मेरे को 20 सील करना है. योर ऑब्जेक्ट इज वेल डिफाइंड. यू आर स्टडीइंग फॉर 4 इयर्स. यू आर स्टडीइंग अबाउट 20 सब्जेक्ट्स एंड अल्टीमेटली वेदर यदि किसी में कम नंबर आ रहे हैं, किसी में अधिक आ रहे हैं, तो दोनों मिला के कम होकर आपका ग्रेडिंग होगा. सो दिस इज आउटपुट. सो इन दिस केस व्हाट इज द आउटपुट? Output is in the form of image, and you have to classify the image. This is, we call it a Siachen Glacier, false color composite. Flooding, hydrology, and water management. Water resources. Have a look. Flooding, hydrology, and water management. You can have a look to a dam. On the right side, there is a dam. उसमें flooding हो रहा है, तो आपने gates खोल दिए. Gates खोले तो पानी जा रहा है. जो आजकल अपन देखते हैं ना कि भोपाल में भदभदा के पानी भर गया, तो हमने गेट खोल के पानी को नदी में, नर्मदा में फ्लो कर दिया. सिमिलरली यहाँ पे भी जो हुआ, जो प्रॉब्लम हुआ, वो पानी को अपने चैनल बना के नर्मदा में निकाल दिया. दैट इज वाटर मैनेजमेंट एंड हाइड्रोलॉजी ऑल्सो. एंड दिस अ डैम. तो कितना पानी स्टोर हुआ है डैम में, कितने इसके चैनल्स खोलने के, कितना पानी निकलेगा, और उसके पानी निकलने से सबमर्जेंस, नॉट सबमर्जेंस, कितना वाटर लॉगिंग होगा फ्लडिंग के कारण. It can be managed, it can be monitored by satellite. It can have a hour to hour, you can have minute to minute information with satellite technology. और आपको वहां जाने की जरूरत ही नहीं है. लैब में या कंप्यूटर बैठिए, आपको सब इंफॉर्मेशन मिलेगा. You must have a software, you must have an expert, and they will give you all the hourly information. सब ये इधर पानी बढ़ गया तो दूसरा खोलो. So there are, if on Narmada, there is a Sada Sarovar dam is there is a Omkareshwar dam is there is a Maheshwar dam is there, Jabalpur में Bargi dam है Narmada पे बने. There are 5 to 6 dams are there. So you can control from the origin point अमरकंटक से जहाँ नर्मदा बहती है और यहाँ गुजरात में जाके भरूच के वहाँ जाके वो समुद्र में मिलती है, तो गुजरात में सरदार सरोवर डैम भी है, मध्य प्रदेश में वो भी है. So you can monitor all the dams. You can. This is known as water management, flooding, hydrology. I was talking about digital elevation modeling. Interferometry are, ये बहुत नया है. Interferometry for synthetic aperture radar for digital elevation modeling. What is interferometry? यदि कोई भूकंप आया, तो भूकंप में क्या होगा? What are the causes of earthquake? There can be tectonic causes and there can be volcanic causes. Tectonic causes मतलब कि कोई चीज टूटी, टेक्टोनिज्म, वो टूटने में कैसे क्रैक आ गए. और वोल्केनो के जो हमारी अर्थ है, अर्थ का जो कंपोजिशन देखोगे तो देयर इज व्हाट यू कॉल, देयर इज अ कोर ऑफ द अर्थ, जहां लावा मैग्मा जो ऊपर आएगा तो भूकंप आएगा या वोल्केनो फूटेगा. तो इंटरफेरोमेट्री की उसमें कितना अर्थ के अंदर कितना
उसमें क्रैक पैटर्न आया, हाउ मच मूवमेंट, इट इज बिकम पार्ट ऑफ व्हाट यू कॉल इट प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है। फिर आजकल हम वी टॉक अबाउट व्हाट यू कॉल अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर। सिविल इंजीनियरिंग में जो भी बात करते हैं वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, भूकंप आए तो वो स्ट्रक्चर टूटना नहीं चाहिए। आपने देखा होगा कि केदारनाथ में फ्लडिंग हुआ आज से 3 साल पहले, सब गांव खत्म हो गए, सब लोग डूब गए, वो जो टेम्पल था उस पर कुछ भी नहीं हुआ। अब हम बोलेंगे भैया भगवान की कृपा, हाँ भगवान की कृपा, तो मैं भी गॉड फियरिंग हूँ, मैं सब चीज मानता हूँ, बट कुछ ना कोई चीज रही होगी वो कैसे बच गया। तो उसके जो फाउंडेशन है, जो उसका है, इट हैज प्रूव्ड टू बी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर। You got my point. So this is how let us not mix up the religious aspect. श्रद्धा हमारी भी है, मेरी भी श्रद्धा होती है, मगर एक उसको कुदरत का, हम ये बोलेंगे कुदरत ने करिश्मा किया कि सब चीजें खत्म हो गई पर हमारा टेम्पल बचा रहा। बट देन यू शुड गो फॉर एलिवेशन मॉडलिंग, ठीक है, कि उसकी फाउंडेशन कहां तक गई है। You got my point. This is how satellite remote sensing goes. Then this is one of Bhuj earthquake. This is very important. There was what you call, when this Bhuj earthquake, probably you were not born also, आप लोग पैदा भी नहीं होंगे, भुज अर्थक्वेक में टेक्टोनिक कॉज भी थे और उसके अंदर लावा निकल के स्प्रेड आउट भी हुआ था सरफेस पे। You got my point? And then small mounds are there. It is FCC covered on SRTM, ये पूरा उन्होंने एलिवेशन मॉडल बनाया अर्थक्वेक का, भुज का। Have a look. This is on a digital elevation model on 1:50,000 scale, 90 meter and 1 kilometer. You can compare it, how things look like in the form of elevation. यदि ये पहाड़ है तो कटेगा, तो कट के कितना जाएगा? This is interferometry for movement of study. पहले हम बोलते हैं कि इंडियन कॉन्टिनेंट और अफ्रीका, they were together. उसमें जो वो इंटरफेरोमेट्री मूवमेंट है, इंटरफेरोमेट्री वो समझ आया ये? You can see the different type of mountains. It is snow-cladded mount and there is a boulders on this side and it is not containing any what you call it is devoid of what you call ice cover. एंड इंटरफेरोमेट्री, तो जो मैं बोल रहा था ना कि अफ्रीका का पार्ट इंडिया के जो बे ऑफ बंगाल में जाके जो वेस्ट बंगाल का नॉच है उससे जाके मैच होता है, तो अल्टीमेटली इट हैज कम आउट फ्रॉम दैट पोर्शन एंड यू कैन गो फॉर मेजरमेंट इंटरफेरोमेट्री, ओके, मूवमेंट स्टडीज। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि देयर इज वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी इन देहरादून, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, वो मेक स्टडी ऑफ हिमालयन जियोलॉजी और उस पर काम करेंगे, पूरे माउंटेन्स को मैनेज करेंगे, हिमालयस को, कितने लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, कितने अर्थक्वेक आ रहे हैं। नो, यू मे नॉट ऑब्जर्व बट देयर आर माइक्रो अर्थक्वेक्स आर कमिंग इन दिस पर्टिकुलर लोकेशन। जो वहां रहते हैं उनको मालूम है, उनको मालूम ही नहीं पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट सिंथेटिक अपर्चर रडार डेटा रिक्वायर्ड फॉर दिस। देन वंस एक दिस सियाचिन, नो प्रॉब्लम, वी डिस्कस दिस आल्सो सियाचिन। यू गॉट दिस इज एलिवेशन मॉडल। आपने फर्स्ट ईयर सर्वे में, सेकंड ईयर में कंटूरिंग पढ़ा होगा, आप टोटल स्टेशन पे गए होंगे, आपने कंपास देखा होगा, आपने लेवल देखा होगा, उस लेवल से ग्राउंड बेस्ड आपने कुछ उसके बेयरिंग निकाले होंगे कंपास से, आपने यदि कोई क्या बोलते हैं टोटल स्टेशन लिया होगा, फिर सीन टोटल स्टेशन यदि देखेंगे उससे देखेंगे, तो यू कैन गो फॉर कंटूरिंग ऑन अ सैटेलाइट इमेज। You don't require any instrument, you require ground-based ground control points, we call it GCPs. With GCPs are created with the ground-based, that is आपका जो टोपो शीट होगी वो करेगा, उसको हम सुपर इम्पोज करेंगे, ग्राउंड डेटा फील्ड एक स्केल पे लाके हम सुपर इम्पोज करेंगे, we'll transfer the ground control points, that this is the basic 100 meter level, then if you go north south, then you can plot the contour with 1 meter interval, with half meter interval, then you can go for complete elevation कि कहाँ रोड जाना है, कहाँ जाना है। This is for Siachen. Siachen is a very important place for the country from many angles. Siachen. There is a movement of glacier. Means यदि हिमालय के टॉप पे कोई स्नो मेल्ट हो रहा है तो उसके मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। यदि एंटार्क्टिका के अंदर टेम्परेचर बढ़ा
और वहां से पानी का मूवमेंट होगा, बिकॉज एंटार्क्टिका से मूव करेगा तो जितने भी सीज हैं, इट इज अरेबियन सी और इट इज व्हाट यू कॉल, जितने ओशन, तो वहां का वॉल्यूम बढ़ेगा. So movement of glacier is, so glaciology is one important subject where remote sensing is always there. तो हर चीज रिमोट सेंसिंग वो चीजें कर सकते हैं, आपका क्या इंटरेस्ट उस पर डिपेंड करता है. See, this is a earthquake. You can monitor the waveform. हमने GSTM में सिस्मोग्राफ भी इंस्टॉल किया है, आप देखा वो सिस्मोग्राफ से हम उसका जो नीचे बेसल रॉक तक जाके ले गए हैं, और कोई ग्राउंड बेस्ड मूवमेंट होगा तो हमारा जो डिजाइन सेंटर है उस पर मूवमेंट आ जाएगा. बच्चों के मैं तो हमने सिखाया earthquake studies. हमारा एक एयर सिस्मोग्राफ है, you know, पुराना डेटा है, हम इसकी सब चीज सीखते हैं उसी से. LIDAR, light detection and ranging. This is once again a laser is acronym for light amplification by simulated emission. लेजर आजकल सर्जिकल लेजर से सर्जरी हो रही है. लेजर टेक्निक से आपके गाल ब्लैडर में स्टोन होगा तो डिसॉल्व कर देंगे लेजर से. यदि आंखों के प्रॉब्लम लेजर से कर देंगे. तो इट इज अ बेसिकली लेजर इज अ कोहेरेंट वेव्स, डायरेक्शनल शार्पली फोकस्ड. तो यदि कोई आपका किडनी में या आपके गाल ब्लैडर में स्टोन है तो लेजर वेव जाके उसको डिसॉल्व कर देगी. यू डोंट गो फॉर सर्जरी, कोई ओपन सर्जरी करने की जरूरत नहीं है. You got my point? So this is, we call it laser remote sensing. It is a biomedical application of laser. Light detection and ranging, LIDAR. This is a full form of LIDAR. How laser scanning works? It has got a penetration capability. You can use it on an alien platform. The aircraft is there. It is penetrating. यदि मेरे को कोई पेट्रोलियम की स्ट्रीम आइडेंटिफाई करना है, ऑयल एंड नेचुरल को पेट्रोल स्पॉन्स करना है, तो मैं यहां पे लेजर की बीम डाल के मैं एक पर्टिकुलर रे निकाल लूंगा. आप समझ में आया? एक बार मेरे साथ प्रॉब्लम आई थी, राजस्थान में हमको पानी निकालना था. वहां पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, उनको पानी चाहिए था. तो राजस्थान में सैंड है पूरा. The advantage is that whatever rainfall 4 इंच का पानी का रेनफॉल होता है, तो there is not enough. पानी बहेगा नहीं, पूरा पानी नीचे जाएगा. तो सैंड में क्या होता है, in the sand when the rainfall is there, it goes at least couple of kilometers below the surface of the earth. तो उसको डिटेक्ट करना. तो हमने रेजिस्टिविटी मीटर से उस पर्टिकुलर एरिया का डीप साउंडिंग करके उस बड़ी चैनल को हमने निकाला था. भवानी मंडी, याद आ गया, भवानी मंडी राजस्थान में आता है, वहां पे टेक्सटाइल मिल रहे हैं, तो उनको पानी की जरूरत, तो उस पर्टिकुलर बीम को निकाल लिया हमने. निकालना. सिमिलर एक बार प्रॉब्लम आई थी इंदौर में, एक क्या बताता हूँ, बिलावली के उधर एक हमारा बताता हूँ, उनके 1 लाख 2 लाख लोग जमा हो रहे थे पूजा पाठ के लिए. ठीक है, उनको पानी चाहिए था, उनको सब 24 घंटे के लिए पानी चाहिए. तो हमने क्या किया कि जो बिलावली में इट इज शैलो एरिया, शैलो मींस गड्ढे में, तालाब है, तो पानी आ रहा है उसको और जा रहा है. तो जो पानी के आव बोलते हैं, हमने उस आव को ढूंढ निकाला. और आव इतनी खतरनाक थी कि उन्होंने 15 हॉर्स पावर की मोटर 24 घंटे 7 दिन तक चलाई. वो पानी मिला, कारण कि एक बिलावली का पानी था, वो डिटेक्ट कर लिया उन्होंने, स्टोर कर लिया. So the identification of a paleo channel that we have done with remote sensing, and then we have used one instrument, अर्थ रेसिस्टिमीटर, और उस पानी की जो फ्रीक्वेंसी थी उसको आइडेंटिफाई करके किया. So it was a combination of ground based information, satellite image and field information, and we achieved the objective. Then elliptical scanning. LIDAR measures arranged in an elliptical and spiral form. What is spiral? आप लोग तो जब बॉल पेन यूज नहीं करते,
दी बॉल पेन में पहले एक स्प्रिंग आती थी बॉल पेन के अंदर, वो स्प्रिंग में हम वो लगाते थे और उसको प्रेस करते थे, दम बंद होती थी, खुलती थी, स्पाइरल. सो सिमिलरली इट इज एन स्पाइरल. सो इलिप्टिकल स्कैनिंग चल रहा है. तब तक करें, मैं बोल दीजिएगा. तिवारी जी लाइन में है क्या? स्टूडेंट्स, यू आर लिसनिंग टू मी? सर कंटिन्यू करो कि बंद कर दो? नहीं सर, मतलब आप थोड़ा कंटिन्यू. फास्ट कर दो. यस चलिए, सर. I will take 10 minutes now. I will take 10 minutes. This is the one application of the technology है. टेक्नोलॉजी को ग्राउंड बेस्ड आना चाहिए. Whatever technology is ground based. मतलब कि कोई भी आप टेक्निक करिए, यदि कॉमन मैन को उसका यूटिलाइजेशन नहीं होगा तो मतलब क्या उस टेक्नोलॉजी का? आज मैंने आपको इतना लेक्चर दिया, आप बोले इसका यूज क्या है? तो हमने एक प्रोजेक्ट किया था. इट वाज स्पॉन्सर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. Remote sensing and GIS techniques in revenue infrastructure management along with urban growth study of Indore, a case study. इसमें मैं भी था, आपके डॉक्टर नालूकर साहब भी थे. मैं तो I was a principal investigator, नालूकर साहब investigator थे, और there were 2 research scholars also there. It is a very interesting ground-based information. This was done with Indore Municipal Corporation long back in. It was declared to be the best paper by DS. Now, what is the objective? Objective of project was revenue management information. होता क्या है, जैसे मेरा एक घर है तो उसको मेरे को प्रॉपर्टी देना है, प्रॉपर्टी टैक्स देना है. मैंने जमा किया कि नहीं किया, कितना किया. देन इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, MIS मतलब मैनेजमेंट पर्टिकुलर सरफेस ड्रेनेज, सरफेस वाटर. आजकल क्या होता है कि नगर निगम पानी सप्लाई करता है ना. आपने देखा होगा, हमको नर्मदा का पानी मिलता है इंदौर के अंदर. तो नर्मदा का हमने जलूद से पानी को लिफ्ट किया, ग्रेविटी से पानी राजेंद्र नगर आया, टैंक से, पीडब्ल्यूडी टैंक के, कोई बोला टैंक के, एक कोई दिल्ली ओवर पानी स्टोर करता है. अर्बन इस्तेमाल में अर्बन 3 ऑब्जेक्टिव थे. मतलब क्या हो गया, आजकल बाईपास बन रहे हैं, ठीक है. आजकल जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बन रही है, तो देयर इज चेंज इन द अर्बन यूज. 3 ऑब्जेक्टिव्स थे, इंदौर का था. So there was the action plan that I will come back. इसकी क्या responsibility है? I'll skip this slide. I'll skip this slide. This slide. This is the Indore city. एक पुराना मैप है, मैं इंदौर सिटी है. इंदौर में डिफरेंट वार्ड्स हैं, डिफरेंट जोन है. अभी चुनाव हुए होंगे ना, देखा होगा ना कि मेरे वार्ड से फलाना विधायक पार्षद बनाएगा, इस यहाँ से बना. So there is a zonation is there, ward wise and complete इंदौर सिटी. तो हमने एक पर्टिकुलर वार्ड लिया था, एक पर्टिकुलर जोन लिया था. That was our study area. This is वार्ड नंबर 63. ये उसके आउटर बाउंड्री. पीछे जाओगे पहले, बैक में ये तो शुरू में चलो. तो एनीवे, ये आप देखिए, दिस इज द आउटर बाउंड्री. तो कोई भी स्टडी एरिया करते हैं तो हमें उसकी बाउंड्री सैटेलाइट इमेज पे करनी पड़ती है. ये इंदौर का. सो दिस इज वन पर्टिकुलर वार्ड 63. ये सेंटर में इधर आके लिया, ये इधर वाला, ये कॉर्नर ब्लू जा रहा है ना, ये पूरा वार्ड नंबर 63 है. दिस इज द आउटर बाउंड्री. नेक्स्ट. दिस इज द आउटर बाउंड्री, हमारा स्टडी एरिया था. नाउ इन दिस पर्टिकुलर स्टडी एरिया, ये इंदौर का फोटोग्राफ है, आइकॉनस इमेज है, ठीक है. ये वार्ड 63 है. व्हाट इज द लैंड यूज? इसके अंदर एग्रीकल्चर लैंड भी है, इसके अंदर रोड्स भी हैं, और पॉपुलेशन भी, डेंस पॉपुलेशन है पूरा. एंड दिस इज दी, वंस अगेन येलो लाइन इज द गिविंग द आउटर बाउंड्री. ये देखिए, अब हमने क्या किया, इस आउट मैप के अंदर डिफरेंट प्लॉट्स को आइडेंटिफाई किए. ये रेक्टेंगुलर प्लॉट देख रहे हैं, पूरा करते गए. ये कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर कॉलेज को हम बोलते हैं. और ये हम बाईपास की तरफ पहुंच जाएंगे इधर से. ये ब्रजेश्वरी कॉलोनी है, अग्रवाल पब्लिक स्कूल तरफ जाते हैं तो देयर इज ब्रजेश्वरी कॉलोनी. आपने देखा स्कीम नंबर 140 इसको बोलते हैं. और दे आर द लोकेशंस व्हिच आई हैव ट्रांसफर्ड फ्रॉम द टोपो शीट, बिकॉज फोटोग्राफ ये नहीं कहता कि मैं एग्रीकल्चर कॉलेज हूं, फोटोग्राफ ये नहीं कहता कि ब्रजेश्वरी कॉलोनी है.
ये हम लोगों ने बनाई है, नाम हमने दिया है, नामांकन दिया है। सिद्धार्थ सोनी मेरे पिताजी ने मेरे को नाम दिया था। मैं भी वही 2 पांव 2 हाथ वाला आदमी हूँ, ये भी हमारे 2 पांव 2 हाथ वाला है, पर नॉमेनक्लेचर किया गया है। सो सिमिलरली वी नॉमेनक्लेचर दिस एंड देयर आर डिफरेंट टोन्स। देखेंगे ब्लैक के बहुत सारे टोन्स हैं इसके अंदर। रेवेन्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्पेशियल एंड नॉन स्पेशियल, ये हमने नगर निगम से निकाला था। This in this particular shows that what is the service number, name of the property, उसका एड्रेस, ओनर, टोटल एरिया, रेसिडेंशियल है कि कॉमर्शियल है, ये पूरा हमने इनपुट। दिस इज अ ग्राउंड बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू मी बाय इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसका प्रॉपर्टी टैक्स अभी दिया हुआ है। ये ब्रजेश्वरी कॉलोनी का एरिया, हमने वो डेटा तो ले लिया, तो हमने क्या किया कि दिस इज द डेटा प्रोवाइडेड बाय इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, इंदौर डेटा कहां से मिला या किसी ओनर ने दिया? हमने टोटल स्टेशन लिया। आप वर्क करेंगे टोटल स्टेशन डिपार्टमेंट में, टोटल स्टेशन से उसका हमने एरिया निकाला उस मकान का, तो हमारे से 171 आया और 139। आप बोलेंगे इतना डिफरेंस क्यों है? मैं टोटल स्टेशन को इसलिए इंपॉर्टेंस दूंगा क्योंकि मैंने खुद में निकाला है, और ये इंफॉर्मेशन नगर निगम को किसी ने प्रोवाइड की तो उसे कम कर दिया प्रॉपर्टी टैक्स बचाने के लिए। सिमिलरली वी टुक इट इज 139.32 एंड 139.88। ये श्रीमती जो भी था शर्मा जी का था, मिसेस के नाम पे था, प्लॉट नंबर दे दिया 168, उसका टोटल 139.88 हो गया। सो देयर इज अ वेरिएशन ऑफ 0.32 to 0.88, roughly you may call 56 meters point. It is acceptable, but there's a variation is there. So ये जो प्रोजेक्ट था हमारा, ये लर्निंग पर्पस के लिए था। Then we took an iconos image also. जो सैटेलाइट, उस समय IRS डेटा नहीं था, iconos सैटेलाइट था, उसकी इमेज ली, तो उसमें कितना एरिया आ रहा है? उसमें 111 आ रहा है, because this area 111 iconos इमेज का सैटेलाइट ऊपर से लिया। और कब का डेटा हमने वी ट्राई टू टेक द डेटा सिमिलर, बट हमने सोचा था कि भैया जो ग्राउंड इंफॉर्मेशन है वो आज लो या कल लो, एरिया तो उतना ही रहना है। ठीक है, आज मेरी हाइट में जो 10 साल का था, मैं हाइट 5 फुट 1 थी। मैं जब वो 20 साल का, मैं हाइट 5 फुट 5 इंच हो गई। अब मेरी हाइट बढ़ने वाली नहीं है, घटने वाली। जब कोई मैं काट देगा अगर तो घटेगी नहीं, घटने वाली। समझ आ गया? हाइट तो सिमिलरली जो ग्राउंड एरिया उतना ही रहेगा। सो देयर इज अ वेरिएशन इज देयर। तो जब हम प्रोजेक्ट करते हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट करते हैं, तो हमको एक्यूरेसी एस्टिमेशन करना पड़ता है। उसमें हमको कोई मैनिपुलेट नहीं करना है, हमें कोई प्रूव नहीं करना है कि मेरे को 2+2 4 ही होना चाहिए। हमको एग्जाम पास नहीं करनी है, हमें एक चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए। ओके, दिस इज हाउ वी प्रोसीडेड। देयर वर ऑल डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग। अब जो हमने आइकॉनस इमेज ली थी, व्हाट वाज द रिजोल्यूशन? ठीक है ना, देयर आर मेनी फैक्टर्स आर देयर। सो वी कैलकुलेटेड ये सब ने स्टैंडर्ड 139.29 139.29 दिया, और सबका वेरिएशन था। वो इसलिए हो गया था कि कोई प्लॉट 2 थे, उसके 1 हो गए, 1 के 2 गए, कट गए, ओनरशिप बदल गई। बट यस, जब कॉलोनी कटती है तो उसमें एक ही एरिया इंफॉर्मेशन आएगी। आप समझ आ गया ना? सो दिस इज हाउ वी हैव टेकन दिस नगर निगम एज अ बेस एंड हाउ मच वेरिएशन इज देयर, देन वी विल एनालाइज द डेटा। Now have a look. We have identified this house. ये बाईपास पे हमने एक मकान, बजेश्वरी मकान को आइडेंटिफाई किया, उसके आउटर बाउंड्री हमने निकाली। ये पीपीटी में थोड़ी इमेज में जूम किया हुआ है, जब कम करेंगे तो ऊपरी बाउंड्री दिखेगी। ये बाउंड्री निकाली, और ये प्लॉट डिटेल्स निकाल के हमने निकाला कि दिस इज प्लॉट डिटेल्स एंड हु इज द प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी एड्रेस देगा 157 ग्रेटर बजेश्वरी कॉलोनी, ओनर इज खंडेलवाल, एरिया इज 125, प्रॉपर्टी टैक्स 2026 2021, FID, and this is the property value. So when I put a click, तो ये this is known as non-spatial data, tabular format data है, और ये हमको इमेज आ गई। तो हम इमेज से हम कैलकुलेट कर लेंगे एरिया सही है कि नहीं है। उसमें एक्यूरेसी रहेगी। भाई कोई चीज हम ले रहे हैं तो टेप से ही मेजर करते हैं, तो उस टेप के भी मिनिमम रहता है कि टेप रहेगा तो उसका 1 सेंटीमीटर उसका मिनिमम डिस्टेंस होगा, 1/2 सेंटीमीटर नहीं होगा। We have to compromise on the quality and quantity both.
If you want to improve the quality, then quantity you have to compromise. If you want to go for quantity, then you have to improve, you have to compromise with the quality also. But yes, but we can get this information. Next, ये देख लीजिए, हमने एक एक मकान को आइडेंटिफाई किया, उसमें बनी नहीं थी, बन रही थी ब्रजेश्वरी कॉलोनी. Okay, and there were open lands were there. So you identify each and every object and find out who is the owner of that. So this information input of the ownership was provided to me by municipal corporation. Image मेरे पास थी, मैंने image को classify किया, मैं इसका 3 dimensional picture निकाल के building की height निकाल सकता हूँ, building की length निकाल सकता हूँ, building की breadth निकाल सकता हूँ, and this can be recorded. Same as this also, that this is the blue house. What is the plot details? These are different houses. This is the road width. आपने मकान रोड में encroachment किया तो वो भी दिख जाएगा ना, क्या ना, ये और ये बिल्कुल क्लियर बताएगा. ऐसा नहीं कि मेरा मकान है तो मैं छिपा लूंगा, बताओ. बस सैटेलाइट झूठ नहीं बोलता, सैटेलाइट सच सच बोलता है. सैटेलाइट नहीं बोलता कि साहब ये मुख्यमंत्री का मकान है, या ये हमारे पार्षद का मकान है, या बेचारे एक गरीब आदमी का मकान है. मकान मकान है, रहने वाला बदल जाएंगे, किसी का भी मकान हो सकता है, बट ढंग से बनाए तो पूरा हमको डिटेल्स मिल जाएंगे. वी कैन मॉनिटर एंड मैनेज फॉर रेवेन्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम. ये देखिए सब उसी का किया था. एक एक मकान का आइडेंटिफाई कर हमने डिटेल्स निकाले. इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सिस्टम, ये टोटल स्टेशन, ये दिस इज टोटल स्टेशन. अब इसमें क्या होता है, जब हम बाउंड्री लेने जाते हैं तो डरता है आदमी, जैसे मेजरमेंट क्यों करें, हमारा मकान तो नहीं जा रहा है, तो हमको अंदर नहीं घुसने देते थे. तो हम क्या करते हैं, फ्रंट में निकालते थे, साइड में निकालते थे, बाकी हम रेक्टेंगल मान लेते थे. दिस इज द टोटल स्टेशन. दैट द रिसर्च स्कॉलर्स विद मी. दिस इज एग्रीकल्चर एरिया. इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी. एक हैंड से आप पूरा मेजर कर सकते हैं कितना एग्रीकल्चर कॉलेज का कितना एरिया है, विद टोटल फील्ड फोटो आल्सो. दिस इज अ जीपीएस. एक हैंडमेड हमारा ग्लोबल पोजीशन सिस्टम था. हम एक बेंचमार्क यहाँ पे खड़े रहे, उसको हमने लोकेट किया with the satellite image. Yes. और हमने ground based information दी तो coordinates मिल गए. So there is a correlation with the satellite image with GPS and ground based information. So you can correlate. Then this is one second point. This is third point. ये tower है, tower image में भी दिखती थी. तो इस टावर के 1 2 3 4 पॉइंट हमने के जीपीएस से निकाला इंफॉर्मेशन. ये तालाब है जिसका एनक्रोचमेंट हो गया. हम जाते हैं ना ब्रजेश्वरी की तरफ, रिंग रोड करके हम क्रॉस करते हैं, तो ये तालाब ऐसा था पहले. अब आप देखेंगे तो बहुत डिफरेंट दिखेगा. ये कॉलोनी कट गई यहाँ पे. ये देखिए, दिस इज अ टोटल स्टेशन मैप प्रिपेयर्ड कि हमने कहाँ पे कैसे निकाल के हमने गए, पूरा का पूरा एक एक मकान निकाला. इसमें एक एडवांटेज क्या है, यू कैन सप्रेस द डेटा. हमने सप्रेस कर दिया तो हमें मकान के सिर्फ इंफॉर्मेशन है. दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ इमेज प्रोसेसिंग. सिर्फ आपको काम के मकान दिखते जा रहे हैं. दिस इज द ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स बाय जीपीएस. ये हमने जीपीएस के पॉइंट गया, ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट लिए थे, उन सबसे इमेज को ग्राउंड टोपो शीट रखा, उस पर इमेज रखी, उसके देयर विल बी अ पेपर डेटा, उसमें थोड़ा वेरिएशन होगा, बट यस वी कैन गो फॉर दिस इज अवर द आउटर बाउंड्री ऑफ द वॉल. यू कैन सी एंड ऑल द हाउसेस दैट यू आर सीइंग इन इमेज वी हैव मेजर्ड with the ground based information also. Now we come to water system. ये अर्बन प्लानिंग का हो गया कि कौन सी टंकी से पानी कहाँ जा रहा है. पाइपलाइन जा रही है तो इस रोड के अलॉन्ग जा रही है, एक मेरे जा रही है, और किसी कहीं पे पानी सप्लाई बंद हो गया तो कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है. सो वाटर सप्लाई सिस्टम ऑफ पीडब्ल्यू टैंक, ये पीडब्ल्यू टैंक यहाँ पर पलासी में, उस टैंक की इंफॉर्मेशन है ये पूरी की पूरी. आप अभी अप्रिशिएट करेंगे कि पीपीटी बनाई, मतलब एक्चुअल मैप था मेरे पास. दिस इज हाउ द लाइन्स, उसमें वॉल्व है, 4 इंच का पानी में तो कितना सप्लाई करना, सप्लाई में ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा. वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ कृषिनगर एग्रीकल्चर कॉलेज का, हमारी स्टडी एरिया था कृषिनगर वाला एग्रीकल्चर कॉलेज. ये पूरी डिटेल्स मिल जाएंगे आपको, रोड जा रही है, कहाँ से पानी जा रहा है. सो दे आर द डिफरेंट लीजेंड्स, डिफरेंट ऑल द दिस वी गॉट इट फ्रॉम पीएचई डिपार्टमेंट. कितनी लेंथ है, कितने टाइप का पाइप जा रहा है, व्हाट इज साइज ऑफ द पाइप, ये पूरा का पूरा. एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, पहले जो नगर निगम में जो मकान अप्रूव होता है वो अमोनिया प्रिंट्स पे आते थे, पहले कंप्यूटर नहीं था. तो अमोनिया प्रिंट्स के अंदर ये प्लॉट की बाउंड्री है, ये डिटेल्स हैं. जो आर्किटेक्ट इंजीनियर होगा वो मकान की प्लानिंग करता था, नगर निगम सबमिट करता था, उसका अप्रूवल होता था. आजकल सब डिजिटल आ गया है. पहले विजुअल था. ये अपरेंस पॉल मैप आइए देखिए, इसके अंदर ये पूरा
यूजिंग आइकॉनस इमेजरी पूरा अपने पूरा देखा कि कितनी कॉलोनियां हैं, ये पूरा हमने देखा यूजिंग आइकॉनस इमेजरी। अब यहाँ क्या हो रहा है, मनोरमागंज के अंदर जहां मैं रहता हूँ 65 से, पहले बड़े बड़े प्लॉट थे 1 लाख स्क्वायर फीट के, 50,000 स्क्वायर फीट के, उनकी ओनरशिप चेंज हुई तो वहां मल्टी बनने लग गई। इट इज अ चेंज, अर्बन स्प्रॉल। आपने एग्रीकल्चर लैंड देखा होगा ब्रजेश्वरी पे, वहां पर जो एग्रीकल्चर लैंड था कन्वर्ट इनटू हो रहा है मकान बनने में, कॉलोनीज के अंदर, उसके अंदर। सो दिस इज शोइंग हाउ मच चेंजेस हैव अकर्ड इन लास्ट। इफ योर डेटा ऑफ 2005, इफ योर डेटा ऑफ 2006, 2008, ये डेटा पूरा मिल जाएगा। यू कैन कोरिलेट व्हाट इज चेंज डिटेक्शन। आप फोटो देखते हैं ना कि मैं 5 साल का था कैसा दिखता था, मैं 10 साल का हुआ कैसा दिख रहा हूँ, मैं 15 साल का हुआ कैसा, 20 साल का हुआ कैसा, और सोनी साहब आज 65, 68 ईयर्स के तो कैसे। चेंज डिटेक्शन, so we can go for change detection also. Same, ये बड़ी गौरटोली है, उसके बाद में लाला राम नगर है, ये सेंट पॉल स्कूल भी आ गया है, ये सब का पूरा हमने चेंज डिटेक्शन के निकाला था। आज आप जाएंगे सेंट पॉल स्कूल के वहां एक नई बिल्डिंग बन गई है। इफ यू गो टुवर्ड्स सेंट पॉल टू एग्रीकल्चर कॉलेज, तो इट इज चेंज डिटेक्शन। ये एग्रीकल्चर, इतना एग्रीकल्चर था, उसको जमीन लेके अंदर रिंग रोड निकाल दी, उनकी जमीन सब चली जा रही है। अभी भी हड़ताल कर रहे हैं एग्रीकल्चर, हमारी जमीन मत लो भाई, हम जमीन मत लो। बट फॉर डेवलपमेंट you have to convert the land, you to procure the land। यदि हमको मेट्रो बनाना है तो हमको जमीन लेना पड़ेगी, उसको नुकसान तो होगा, इसकी जमीन जाती है उसको बहुत तकलीफ होती है। पर क्वेश्चन क्या है कि यदि आपको मॉनिटर करना है, मैनेज करना है, तो चीजें बर्दाश्त करनी पड़ेगी, करना पड़ेगा। ये सब एक एक पिपलाना, जो आप देखते हैं पिपलाना का ब्रिज बना हुआ है इधर, पहला पूरा खाली था, देखिए पूरा सब कन्वर्ट हो गया। ये 2006-7 की इमेज है, भाई 15 साल में सब चेंज हो गई है पूरी। ब्रजेश्वरी कॉलोनी का ये रैंडम मकान थे, आप राइट से जाएंगे अग्रवाल पब्लिक, उधर श्रीमाया होटल भी आता है, उधर अग्रसेन अग्र पब्लिक, ये पूरी की पूरी कन्वर्ट हो गई एग्रीकल्चर एंड कन्वर्ट हो गए कॉलोनीज में कर दी। ये देखिए, छोड़ दीजिए, काटो सेट कर दीजिए। ये देखिए इमेज शोइंग द ग्रोथ ट्रेंड ऑफ मनोरमागंज, जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे को बड़ा लाड़ था, तो देखिए कितने चेंजेस आए। आई कैन गो फॉर दिस रोड्स कन्वर्टिंग, पहले आधी आधी रोड सब वाइड हो गई, ये सब 4 बनती जा रही है। पद्मावती कॉलोनी, इन ग्रोथ ट्रेंड ऑफ ब्रजेश्वरी कॉलोनी। आज हम लेटेस्ट इमेज लेंगे, इन दोनों को इमेज करने मालूम पड़ेगा कि ये जो एग्रीकल्चर लेने वहां सब मकान बन गए, रोड बाईपास बन गई सबके सब। सो दिस सैटेलाइट कैन गिव यू दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। थैंक यू। दिस इज द लाइट साइड जिसके लिए आप इंतजार कर रहे होंगे। थैंक्स वेरी मच फॉर वेरी वेरी पेशेंट। रफली कितना 1.5 घंटे का लेक्चर हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस लिसनिंग। एनी क्वेश्चंस अभी आप कहेंगे तो हम कॉलेज में आके आपको बताएंगे, सिखाएंगे। ऑनलाइन एक अलग, हम ऑनलाइन में इतने एक्सपर्ट नहीं है, हो गए हम एक्सपर्ट। हम ऑफलाइन वाले रहे, हम ब्लैक बोर्ड वाले रहे थे, हम पढ़ाते थे, हमारा ब्लैक बोर्ड ब्लैक होता था, हमारा ब्लैक बोर्ड ग्रीन बोर्ड पे आ गए, हम व्हाइट बोर्ड पे आ गए, आजकल सब चीजें आ गई। सो थैंक्स वेरी मच। एनी कमेंट्स? If you have any questions, you can please ask your questions in comment section or chat box. आप मुझे मेल कर देंगे, मैं जवाब भी दे दूंगा। हाँ, गुड इवनिंग सर। मेरा एक क्वेश्चन था कि ये जो रिमोट सेंसर है वो टोटली सैटेलाइट्स पे डिपेंड रहता है ना अभी, तो अगर बाय चांस सैटेलाइट पे कुछ प्रॉब्लम है तो फिर इसको कैसे डील किया जाता है? कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? सर मैं कह रहा हूँ कि जो रिमोट सेंसर है इसमें टोटल जो पिक्चर्स लेने का काम है सैटेलाइट्स के थ्रू हो रहा है, तो अगर कोई सैटेलाइट्स में इशू आ जाता है तो फिर उस प्रॉब्लम को कैसे क्या फेस करा जाता है? देखिए, हर एक सैटेलाइट की लाइफ होती है, मेरी बात तो। यस सर। मींस व्हेन यू have one particular satellite into orbit, it has got what you call a life span is there. Every sensor has life span. इसलिए आपने देखा होगा कि there is a series of satellites. हम लोग जो सैटेलाइट शुरू किया था, पहला आर्यभट्ट गया था, फिर भास्कर 1 हुआ, भास्कर 2 हुआ, फिर इंडियन रिमोट सेंसर 1 2, there is a series of satellites. और सैटेलाइट में प्रॉब्लम क्या आएंगी? एक तो सेंसर्स काम नहीं करेंगे, डेटा नहीं मिलेगा हमको। यस सर। दूसरा क्या होगा कि सैटेलाइट के जो चार्ज कपल डिवाइस है, सोलर पैनल्स है, वो खराब होंगी। ठीक है, तो सैटेलाइट स्पेस के अंदर हर कंट्री के
बोलते हैं जैसे कचरा बोलते हैं ना, जंक जंक, स्पेस में बहुत सारा जंक सैटेलाइट्स है। हम लोग प्लान करते हैं कि ये सैटेलाइट ठीक नहीं हो रहा है, so there should be one more satellite. Similarly, insect communication satellites का कम्युनिकेशन में सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स गए, क्योंकि हर सेंसर्स की एक लाइफ स्पान रहती है। तो एक बार खराब हो गई तो खराब हो गई, हम उसको ठीक करते हैं। आजकल क्या अमेरिकन से नासा ने ये कर दिया कि जो सैटेलाइट खराब होता है, दे मेक इट ए स्पेस शटल एंड दे ब्रिंग इट बैक टू द अर्थ आल्सो। टेक्नोलॉजी यहां तक पहुंच गई है कि खराब सैटेलाइट को हम ठीक भी करें। यदि हमें 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, हम उसको गैरेज में ले जाते हैं, ठीक करते हैं, ठीक है, और ठीक करके फिर चलाते हैं। बॉडी का सस्पेंशन बिगड़ जाता है, बॉडी का पेट्रोल टैंक में प्रॉब्लम आती है, बाकी बहुत ही खराब होगा तो उसे राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो सिमिलरली सैटेलाइट्स यदि कोई खराब हो रहा है तो उसको कई बार हम ऑन बोर्ड प्रोसेसिंग करके ठीक करने की कोशिश करते हैं कि पेलोड किया जाए। एक आपको मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा। एक इसरो ने, इट इज नॉट टू बी, मतलब इट इज अ फैक्ट, एक सैटेलाइट भेजा हमने रिमोट सेंसिंग का, 79-80 की बात कर रहा हूं। सैटेलाइट स्पेस में गया, एक ऑर्बिट में चला गया। यहां से टेलीमेट्री, टेली कमांड, दो चीजें होती है। टेलीमेट्री में यहां से वहां से जो सिग्नल्स आएंगे, टेली कमांड में हम सैटेलाइट में से कमांड देते हैं, भैया तू शटर खोल और हमको इमेज दे। कैमरा में भी ऐसे होता था कि हम शटर खोलते थे, क्लिक करते थे, इमेज आती थी। आज के इसमें भी था यू क्लिक एंड देन यू गेट नेक्स्ट इमेज। अब वो हुआ क्या कि सैटेलाइट का सेंसर ने काम करना बंद कर दिया, सैटेलाइट ने काम करना बंद कर दिया। अब यहां से बहुत सारी कमांड दी गई, नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि भाई उस सैटेलाइट को कुछ तो करो। तो हमने सैटेलाइट को पूरा बोलते ना झकझोर दिया, उसको झकझोर दिया मतलब कि उसको रोटेट कर दिया, लेफ्ट सर्कुलर मोशन दिया, राइट मोशन दिया, उसको ऊपर से दिया, उसको किया, काम करने लग गया, सेंसर खुल गया। समटाइम इट इज ऑप्टोमैकेनिकल डिवाइस, द सेंसर्स आर ऑप्टोमैकेनिकल, ऑप्टिक्स भी है, मैकेनिकल भी है। मैं कमांड दे रहा हूं तो शटर खुलना चाहिए, तो दिस इज अ मैकेनिकल एस्पेक्ट आल्सो ऑफ द सेंसर। ऑप्टिक्स भी रहना चाहिए कि वो लेंस पे होना चाहिए, यूर अबव एटमॉस्फेयर, तो डस्ट रहना ही नहीं है। तो जो ऑप्टोमैकेनिकल डिवाइस है कि शटर खोलने का जो मैकेनिकल पार्ट है वो काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए पेशेंस हमको करना पड़ता है, वो चीजें होती हैं। फेलियर्स आर देयर, फेलियर्स आर देयर। जैसे हमारा अभी PSLV गया, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से 15 दिन पहले हमारे मित्र ने उसको लॉन्च किया। तो उसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेज थी। फर्स्ट स्टेज पे गया, सेकंड स्टेज पे, थर्ड स्टेज पे गया। थर्ड स्टेज में उसको डेटा रिसीव करना था, डेटा रिसीव नहीं किया, तो इट इज नॉट अ टोटल फ्लॉप। सैटेलाइट फ्लॉप नहीं हुआ है, मतलब 3 स्टेज वहां तो ऑर्बिट में चला गया ना, इट इज गॉन, इट इज रिच। नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम विद द डेटा एक्विजिशन। तो जो डेटा एक्विजिशन का पार्ट है जिसमें की प्रॉब्लम है, हम उसको रेक्टिफाई करेंगे और नेक्स्ट सैटेलाइट भेजेंगे तो उसमें डेटा को इंप्रूव हो जाएगा। सो एवरी फेलियर इज पार्ट ऑफ लर्निंग। यदि आप किसी सब्जेक्ट में फेल होते हैं, जैसे 35 नंबर 15 नंबर मैंने तो, या मेरे 5 कंपोनेंट थे, A B C 1 2 3 था, मैं 1 2 में 3 मेरा वीक था, तो जब हम स्पेशल एग्जाम देंगे हम 3 पे कॉन्सेंट्रेट करके निकाल ले जाएंगे। अब फेल हुए ना, तो फेल से घबराने का नहीं कभी लाइफ के अंदर, फेलियर तो हमेशा होते हैं इंटरव्यू में। तो आपको मैं एक एडवाइस भी दे रहा हूँ कि लाइफ के अंदर, अभी तो मैं शुरुआत हुई है, कंपटीशन भी है, सब, इट इज नथिंग टू डू विद रिमोट सेंसिंग, सब चीजें हैं। किसी की फर्स्ट पोजीशन आएगी, किसी की सेकंड पोजीशन आएगी, कोई सेकंड, पर लाइफ में कौन कहाँ चलेगा, फेलियर से ही आगे बढ़ना चाहिए हम लोग को। तो डोंट हैव एनी डिप्रेशन, मेहनत करो, सक्सेस हमेशा मिलेगी। हार्ड वर्क ऑलवेज पेस, दिस इज द फंडामेंटल। किसी से कंपेयर मत करो, तो फर्स्ट रैंक है, मेरी 10th पोजीशन है, मैं क्लास में 60वां हूं, मैं क्या हूं, फर्स्ट में जान दो उसको, वो फर्स्ट में, मेरी 60वीं है, मेरी 50वीं है, मेरी 15वीं है ना, मैं कहीं से बेटर भी हूं, जिनको एडमिशन नहीं मिला या वो इंजीनियर नहीं बन पाए। तो मैं अपने आप को इंप्रूव करूंगा, मेरे को सिर्फ मैं आम होना चाहिए कि मुझे अपने आप को कॉम्पिटिटिव बनाना है इसके अंदर। मुझे ये नहीं देखना कि विकास ने क्या किया या विवेक ने क्या किया, फलाने ने क्या किया, ऐसा नहीं है। ऐसा वो अपनी जगह पर, मैं अपनी जगह पर हूँ। यू गॉट योर ओन आइडेंटिटी। सिमिलरली सैटेलाइट्स के अंदर फेल होते हैं, सैटेलाइट्स के अंदर होते हैं, हम ठीक करने की कोशिश करते हैं, और नहीं होते हैं तो ठीक है, आगे चलता है। ओके, आई थिंक यू आर satisfied. Anyone else? Any query? Sir, there was a question of Murali Krishna. Why are we not using remote sensing in UV region? कुछ सुनाई नहीं दे रहा, बोलेंगे जोर से। Sir, there was a question of Murali Krishna. Why are we not using remote sensing in UV region? In UV region में हम remote sensing क्यों नहीं यूज कर सकते? किसी UV region में हम remote यूपी रीजन में, यूपी के अंदर UV अल्ट्रावायलेट,
Ultraviolet. Ultraviolet. Okay, ultra. You know what is the bandwidth of ultraviolet? विजिबल 0.4 से होता है, अल्ट्रावायलेट 0.3 आता है. अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, इंफ्रारेड रेज होती हैं. आपको बताता हूं कि पुराने जमाने में एक इंफ्रारेड लैंप आते थे, इंफ्राफिल लैंप, उसको लगाते थे और उसको हम जहां हमारी मसल्स जाम हो जाती थी तो बायोमेडिकल में उसको रेस को भेजते थे तो हमारी मसल्स रिलैक्स हो जाती थी, हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता था. उसको इंफ्राफिल लैंप बोलते थे. ठीक है. यदि आपकी दादी होंगी, आपके माता जी होंगे, उनसे पूछेगा, एक लैंप आता था जैसे उसकी लाइट आती है ना, जैसे अपन टेबल लैंप पढ़ते हैं तो टेबल लैंप की येलो लाइट होती है, जैसे इंफ्रारेड लैंप आते थे. Ultraviolet rays are used for biomedical purpose, but their frequency is on minus, what you call, on minus side. Ultraviolet means not minus side, 0.4, 0.3 to 0.2 में जाती है. तो अल्ट्रावायलेट रेज का एप्लीकेशंस हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं. 0.5 to 0.7 or 500 nanometer, 700 nanometer, they are used for identifying particularly the rocks, soil and agriculture. और जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनका हम एटमॉस्फेरिक स्टडी में काम करते हैं. दे आर यूज अल्ट्रावायलेट रेज, बट दे आर हैविंग वेरी लो यूजेस, लो फ्रीक्वेंसी के हैं वो. ओके, Thank you. और पूछिए. Sir, there is one more question from Shankar Anand. Sir, GPS system is there already. Why to spend more on geospatial technology? Please repeat. Sir, प्लीज रिपीट. सर क्वेश्चन ये है, जीपीएस सिस्टम ऑलरेडी अवेलेबल है तो ये जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी पे और ज्यादा पैसा स्पेंड करने की क्या जरूरत है? See, we started remote sensing in India, particularly in 79, 77. Bhaskara 1 was there. What was the resolution? In Bhaskara 1, the resolution was 72.5 meter. Means one pixel will represent 72.5 meter on the ground. ठीक है? Then we moved to Bhaskara 1, IRS 1, IRS 2. We have improved the quality of the sensor, we have improved the quality of image. Nowadays, which geospatial satellite जा रहे हैं, उसके अंदर पहले जो हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं तो डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड. What about नैनो सेकंड्स? 60 डिग्री का 60 सेकंड का 1 मिनट, 60 मिनट का 1 डिग्री. तो 60 सेकंड के अंदर भी what about 59 seconds, 58, 57, 56, 55. So there are different bandwidths are there. So if you want to go for more accuracy, this will come by experience. This will come by experience. Now we have got a satellite in remote sensing which is having a resolution of half a meter. And if you zoom it, you can bring it to 1/4 of a meter. यदि हम फिट की बात करें तो ग्राउंड पे जो 2 फीट की चीज है, 3 फीट की, हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इस सड़क पे सिद्धार्थ सोनी खड़े हैं तो मैं उसको आइडेंटिफाई करूंगा बिकॉज आई गॉट एक्यूरेसी ऑफ 2.5 मीटर. इफ आई मेक इट टू हाफ मीटर, मतलब 1 मीटर ला तो 3 फीट, मेरी हाइट 6 फीट की, 5 फीट की है, तो 3 मीटर की चीज दिखेगी, 5 फीट की चीज दिखेगी. सो दिस जियोस्पेशियल रेफरेंसिंग हैज कम बाय एक्सपीरियंस ऑफ स्पेस प्रोग्राम starting from say 75 or 70s to last 52 years. तो इसलिए हम हर जगह नया सैटेलाइट भेजते हैं सैन्य, और कई बार रिपीट करना पड़ता है. वी हैव टू अपग्रेड. जैसे पहले कार आती थी, एम्बेसडर आती थी, फिएट आती थी, स्कूटर में वेस्पा आती थी, बजाज लम्बरेट आती थी. अब हम एक्टिवा पे भी आ गए, हमारी मोटरसाइकिल बहुत फास्ट मूव में आ गई और डीजल कंजम्पशन बढ़ गया, मतलब कंजम्पशन कम हुआ तो एवरेज बढ़ गया. So this mechanical, or they come with experience. Okay, so this program will continue. Program will continue. Space program is never going to add. But the only thing is you have to talk about the new satellites, all these things. This will continue. Okay. Any more? I think you're Yes, sir, PPT was sufficient to us for us to understand this topic very deeply. Thank you, sir, for sharing your wealth of knowledge and such amazing PPT. With also, thank you, sir, for answering all these questions. We are extremely grateful that you could give
us your valuable time and help us in exploring this field of remote sensing and geo satellites. Thank you, sir. So, मेरा आपसे ये रहेगा कि मैं रिटायर हो गया हूँ कॉलेज से, आई हैव रिटायर्ड सुपर एनुएशन बोलते हैं कि आफ्टर वन यू रीच टू एज ऑफ 65 यू हैव टू आई जॉइंड दिस इंस्टीट्यूट 1977 मैं बैठ ज्वाइन किया था मैंने, और मैं भी आपके जैसे ही था, मैं भी उस वक्त था, पर अभी भी मैं अवेलेबल हूँ। आपको कोई ऐसा ये ऑनलाइन में ठीक है, ऑनलाइन होता है, चलिए वी आर कनेक्टेड, हमको जब पुराने लोग ऑफलाइन में हमको बड़ा मजा आता है क्योंकि फेस टू फेस बात करते हैं, कुछ समझ में आता है, देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हम चॉक डस्टर से या हम पेन से या कभी से मूव करेंगे। सो ओके, ऑनलाइन इज ऑल्सो टेकिंग अ स्पीड, बट ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है। थैंक यू वेरी मच फॉर अ वेरी स्वीट वर्ड्स यू टेकन टॉक अबाउट मी। Thank you very much. I thank the organizers of ISRS Indore chapter, particularly Vivek Tiwari sir, and we have Kapil Bhalla and our director also Dr. K Saxena. We have got one center for remote sensing and satellite technology in our institute. If you go to ATC building के 4th floor पे जाइएगा, वहाँ पे आजकल हम नैनो सैटेलाइट्स का ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे पास में एक एंटीना सोसाइटी है इलेक्ट्रॉनिक्स में, जिसमें SK जैन है, वो उस पर काम कर रहे हैं। अभी एक हमको आप रहिएगा, एक अटल स्कीम के अंदर नैनो सैटेलाइट्स के ऊपर, वी आर वर्किंग ऑन नैनो सैटेलाइट्स, उसके ऊपर एक सेमिनार करने वाले हैं। उसमें हम स्पीकर्स इसरो से बुलाएंगे, सभी दूर से बुलाएंगे, और आप अटेंड करिएगा। और अभी लगता है कि मैं सिविल इंजीनियर हूँ, बट यू नो सर्टेन थिंग इज नॉलेज बियॉन्ड द सब्जेक्ट। रिमोट सेंसिंग इज अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। हम लोग पहले रिमोट सेंसिंग, एडवांस रिमोट सेंसिंग पढ़ाते थे इलेक्टिव में। हमारा पहले 3152 में सर्विंग का रिमोट सेंसिंग था, और आजकल तो हर कोई रिमोट सेंसिंग पे सैटेलाइट जाता ही है, मोबाइल देखता है, कभी अपने घर का। सो टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव मूव, बिकॉज आज आपको यदि यहाँ से इंदौर खंडवा जाना है, और आपको यदि इंदौर से धार की तरफ या इंदौर से अपने को धामनोद उधर जाना है, तो रास्ता खुला कि नहीं खुला, तो आप सैटेलाइट इमेज ही देखेंगे, लोकेट करेंगे कि रास्ता चल रहा है तो मूविंग व्हीकल्स जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, पानी कितना है कि नहीं है, गाड़ी कितनी है, हम चल सकते हैं कि नहीं चल सकते हैं। सो दिस इज ऑल रिमोट सेंसिंग has become डे टू डे एक्टिविटी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आई एम थैंकफुल टू ऑर्गेनाइजर्स। ये एक चीज बता दें, ISRS इंदौर, इंडियन सोसाइटी फॉर रिमोट सेंसिंग इंदौर चैप्टर हमने 1989 में बनाया था, इंदौर में खोला था, 89 से था। और हमारे उस समय थोड़े मैं पुराने तार झंकृत कर रहा हूँ। हमारे अभी समय सॉइल मैक्रो डॉक्टर पटेल साहब भी हैं, पुराने मेंबर्स में हैं। बहुत लोग हैं, कई लोग चले भी गए इस दुनिया को छोड़ के, जिन्होंने रिमोट सेंसिंग में काम किया हमारे। आप जाके देखिएगा कभी तो अच्छा है। हमने उस समय एक रिमोट सेंसिंग का बताएंगे, एक प्रोफेसर जब शुरू हुआ तो रिमोट सेंसिंग इज बेसिकली इन्वर्टेड एस्ट्रोनॉमी। इन एस्ट्रोनॉमी you are what you call putting a telescope on the surface of the earth and see the stars. In remote sensing, you are putting telescope into space and seeing the earth. You call it inverted astronomy. फिर एक ने कहा था व्हाट इज रिमोट सेंसिंग, बोले एवरीथिंग इज रिमोट, देयर इज नो सेंस टू इट। भाई कोई चीज हम ग्राउंड पे मेजर कर सकते हैं तो सैटेलाइट से क्यों मेजर करें? तो हर जगह नेगेटिव क्रिटिसिज्म भी होता है। पर आज की तारीख में यहाँ बैठा हुआ हूँ और मुझे लॉस एंजलिस में क्या हो रहा है, दुबई में क्या हो रहा है, तो मैं सैटेलाइट इमेज कर देख सकता हूँ। आपको जिम्बाब्वे में क्रिकेट मैच देखना है तो यहाँ से देखना है, एशिया कप होगा तो एशिया कप के मैचेस देखना है। इट इज ऑल थ्रू कम्युनिकेशन, ऑल माइक्रो रिमोट सेंसिंग। Remote sensing is become for livelihood. Thank you very much for a very precious listening. Once again, Thank you. SGSITS. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. तिवारी जी आएंगे नहीं, तिवारी लाइन पे नहीं होंगे, तिवारी जी के साथ डिबेट नहीं होगा। Anyway, thank you on my behalf. Thank you very much. Thank you, sir. This video will be uploaded on YouTube, so you can ask your questions on comment section on YouTube on our official channel of Stimulus. So I would like to thank Team Stimulus, technical coordinator of this event, all the members of Stimulus for working hard for past few days to make this event successful. We have reached to end of the session now. So thank you everyone for your graceful, gracious presence today. You all can leave now. Thank you.